Hello, welcome back to Almighty Blues FC, your fan channel for all to see. और yes, some breaking news और इसलिए मैं आ रहा हूँ, lot of breaking news in fact, और उतना ही नहीं, absolutely एक बहुत ही important announcement होने वाला है about this channel. Yes, तो hopefully we'll have a lot of people joining in क्योंकि यार from now on you'll see even more of me. ये चेहरा याद रखना आप लोग सब लोग. लेकिन यार again thanks a lot जो भी ज्वाइन किया है सब लोग, लाइक ठोक दो so that we have more people joining in. और भूलना मत अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, बिकॉज यस वी आर ऑन द रोड टू 4K. बट ऑब्वियसली ऐसे थंबनेल बता रहा है, टाइटल बता रहा है, वी आर हियर टू डिस्कस ट्रांसफर्स. तो काफी सारा बवाल मच गया है. और मैं यार एवरी कपल ऑफ डेज, बाय द वे फॉर पीपल हु डू नॉट नो, जो नए हैं चैनल में, एवरी कपल ऑफ डेज वी ट्राई एंड डू अ ट्रांसफर शो. लेकिन यार लास्ट जो हुआ है 24 घंटों में काफी सारा हुआ है, तो आई थॉट लेट मी एक्चुअली कम एंड इट वाज अ शॉर्ट नोटिस शो, लेकिन डेफिनेटली बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई लेट यू काइंड ऑफ गिव योर ओपिनियन इन द चैट में. तो पुट इन योर कमेंट्स, क्या लगता है, टेक द पोल एब्सोल्युटली. तो हम घुसने वाले हैं अभी राइट इनटू द ट्रांसफर. बट उसके पहले क्विक शाउट आउट दे देते हैं बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वेट कर रहे हैं. प्रथम इन द हाउस, यस absolutely, ये breaking news है which we will be discussing for sure. Kartikeya, big up. NS Sports TV, big up to them क्योंकि यहाँ Nepal in the house always supporting. Hello Pratham, hello Himshikhar, Aditya, Real Madridista, yes. Hello to Arceus, Chutamani back, Koulibaly to Chelsea, Barca, which news more concrete. बात करेंगे absolutely. Lumani in the house, absolutely. Wow, that's a great source as well, pretty sure. Aditya Gupta in the house और ऋषिकेश as well, absolutely. चलो यार, मतलब हम बात करेंगे, हाँ थोड़ा डिबेट भी है और उतना ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं, बिकॉज बवाल क्यों मचा है. टीम ऑफ द सीजन पिक हुआ और व्हाट पीएफए टीम ऑफ द सीजन, एज ऑलवेज कंट्रोवर्सी गलोर. और हम अपना टीम ऑफ द सीजन भी दिखाने वाले. और ये खाली मेरा नहीं है, आप लोगों को याद है तो वी डिड अ वॉच लॉग रिसेंटली और उसमें हमने साथ में पिक किया था, तो वील शो फॉर पीपल जो नहीं थे, राइट, एब्सोल्युटली. लेकिन लाइक अगेन आई एम सेइंग, डू लाइक द स्ट्रीम और सब्सक्राइब. सबसे पहले ऑब्वियसली द न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज क्या है. मतलब फेब्रिशियो रोमानो ने बताया था कल ही, काइंड ऑफ इंडिकेट किया था, वी काइंड ऑफ न्यू इट. लेकिन मुझे लग रहा था नहीं, ये जस्ट पेपर टॉक, एक नॉर्मल जो होता है रूमर, एंड दैट इज अबाउट Pochettino. I'm starting with Pochettino, absolutely. So Pochettino, obviously, Instagram जो post थे, that was quite clear कि Pochettino is leaving. मतलब अगर आप बोलोगे उसके बाद भी is not leaving, come on, like let's be real. We understand जो होते हैं transfers और absolutely real होने वाला है. और yes, absolutely, we'll be talking about who's coming in. लेकिन even Pochettino, the way he's leaving, मतलब the way he tweeted about it, मुझे लग रहा है यार ये he is showing the white flag. ये देखो आप Instagram stories by Mauricio Pochettino now sound like a farewell message to PSG, of course, and he's going to part ways with the club in the coming days. PSG are expected to announce Luis Campos, a new club advisor, जो already एक बहुत ही बड़ा न्यूज है in itself for PSG, along with obviously जो बवाल मचाया था मिस्टर एम्बापे, मिस्टर PSG recent weeks में. लेकिन यार it is got to be the news that Zinedine Zidane finally, yes, as per my sources, it's literally imminent. Yes, absolutely. Harsh Gupta बोल रहे हैं Zinedine Zidane's, all these rumors about an agreement with PSG are unfounded. Neither Zidane nor I have been contacted directly by the PSG owner. Fair enough. लेकिन from lot of sources, और मैं actually follow करता हूँ, especially for PSG particular sources, I know that as a matter of fact this is going to be convincing. Yes, or maybe एक reason, बड़ा reason था maybe that Mbappe staying back at PSG. Or imagine, bhai, where are you expecting PSG to go? Can they finally get the European glory? And the Zidane होने वाला है, let's be honest, it is going to happen. The fact that Mauricio Pochettino already post कर दिए ही है, and basically PSG will have a replacement. नहीं तो नहीं करते भाई, मतलब इतना as in early नहीं होता. He could have waited for a few days, लेकिन I think it's happening. It is very much happening, absolutely. Oh yes, Fabrizio tweeted that, absolutely. लेकिन again, lot of other sources as well, because of PSG links that I'm talking about, it is quite clear that Zinedine Zidane is going to be going to PSG. I don't know how he's going to change the club. Put in your comments. अगर अच्छा चलो मैं बोलता हूँ अभी माइटी है, बिकॉज अभी तक हुआ नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट ईयर वीगो नहीं हुआ, तो माइटी है. Zinedine Zidane टू PSG. आपने भी रेटिंग दो आप, एंड अगेन पीपल जो नए हैं चैनल में, यू डोंट नो हाउ वी रेट. इट इज बेसिकली ऑल माइटी मींस कि डेफिनेटली होने वाला है. माइटी विच इज लाइक
चलो 8 out of 10 देते हैं, almost kind of sure that होने वाला है. So that is like average, I cannot say, or weak is आप नहीं सोचते होने वाला है. तो I would say definitely Zidane to PSG is mighty लग रहा है, very much so, absolutely. PSG happy with Uber Eats. ये कुटिन्यो का पैसा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? 100 million for Nunez अब कहाँ से आएगा? नेट्स पे आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट पे आएंगे नेक्स्ट. और यस बाय द वे, यार चेल्सी फैंस डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज देयर इज ह्यूज न्यूज इन चेल्सी एज वेल. ऑफ कोर्स आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू चेल्सी फैंस आ जाए और सब लोग लाइक कर दे स्ट्रीम्स, दैट others are also sad, and of course Manchester United fans also have reason excited होने के लिए. लेकिन भाई डार्विन नूनेज, आप लोग सोच रहे होंगे भाई अंकित भाई ने बात नहीं किया, 2 दिन हो गए, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट डार्विन नूनेज. ऑफ कोर्स लड़ाई चल रही थी लिटरली लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में, लिटरली लड़ाई चल रही थी. बट अगेन एज पर द लेटेस्ट एज थिंग्स स्टैंड, yes, Liverpool are going to pay that as an almost a record fee, I would say, 80 million plus bonuses in the last hour. In the last hour, Fabrizio Romano ने ट्वीट किया है, and that is for real as well. मैं वो भी शेयर करने वाला हूँ for people who do not believe, जो basically जिन्होंने नहीं देखा ये ट्वीट, and it's just not about the tweet, वो लग ही रहा था because Haaland to City after what happened, right? एक जवाब देना बनता था लिवरपूल का. एंड आप बोल सकते हो मे बी एम्बापे और चौमनी का जो हुआ बिटवीन रियल मैड्रिड एंड पीएसजी, वही हो रहा है यहाँ पर सिटी और लिवरपूल के बीच में. Benfica have received Liverpool bid for Darwin Nunez. Formal proposal after verbal talks. 80 million plus bonuses. Discussions ongoing on 15 to 20 add-ons. The 15 to 20 million add-ons. Wow, and that's euros that we're talking about. Installments में है, but potential 5-year deal. अब Darwin Nunez, how do you see him? मतलब मेरे लिए he's not quite ready for the Premier League अभी, but again it's a great call. मतलब knowing Klopp, जो क्लॉप करते हैं, डियोगो जोटा का कर दिया है, मतलब आई नो ही वाज ऑलरेडी गुड एट वुल्व्स, लेकिन नेक्स्ट लेवल ही हैज रीच्ड विद लिवरपूल, एंड सेम थिंग विद लुइस डियाज. आई थिंक दिस कैन बी एक्सीलेंट, स्पेशली फर्मिनो जो है, मतलब ही डिडंट प्ले इनफ गेम्स लास्ट सीजन, सो मे बी फ्रेश दिस सीजन, मेरे लिए बढ़िया होगा. लेकिन व्हाट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड? मैनचेस्टर यूनाइटेड आर दे मिसिंग आउट ऑन हिम? क्योंकि मैन यूनाइटेड का फोकस कहीं और है क्या लास्ट 48 आवर्स में? मे बी दैट, आई डोंट नो. दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विद एजेंट but denying any meeting with Ten Hag. तो अभी लग रहा है again mighty to Liverpool, again rate that absolutely. लेकिन again breaking news is not just about the transfers, and we'll come to other clubs like I've been saying, और other leagues के बात करेंगे, definitely करेंगे. लेकिन like यहाँ पर जो है this is the breaking news for the channel. Of course बहुत लोगों ने DM किया था in the last few weeks, and that's something that I was thinking about. Again, only people who can afford, but हमने रखा है in a affordable kind of a price structure. So hopefully people who would like to be interested, जो who would like to call themselves as members, they come and join as members of Almighty Blues FC, the gang that we are creating here. Absolutely, वो family already बन गया. लेकिन हाँ, you can certainly as in go to my channel and join. The moment आप जाओगे तो join का option मिलेगा. I'll just quickly show as to what it is for people who do not know, and we'll come back to transfer news. But I just wanted to let you all know because this is a major movement for the channel, I have to say. So I am looking at basically, there are going to be 5 badges. ठीक है, 5 or rather I would say चलो 6 कर दिया मैंने, 6 कर दिया है. And this is basically Almighty Fan, Almighty Scout, Almighty Coach, Almighty Board और Almighty Goat. तो अलग perks है for every kind of membership level that you have. So again, people who can afford, people who would like to join, definitely we are looking at एक ad भी करेंगे और ज़्यादा perks add करेंगे as time goes on, as we go, and of course the feedback that we get. Obviously, always we are open to feedback on Twitter, on Instagram. DM करो मुझे Almighty Blues FC. And yes, we are almost kind of growing on Almighty Sports Plus as much as Almighty Blues FC. Lekin I think this is our primary channel first, so we have started membership here. So again, I would like to say that there will be shout outs, there will be basically a lot of social media kind of responses, और मैं एक अलग सा ये भी include किया हूँ, especially for fellow channels who might be interested. I don't know that मैं उनका link add करने वाला हूँ in the description, और उनको भी shout out देने वाला हूँ in certain kind of badge level जो आप देखेंगे once you go to that page. Absolutely, so it's on the page. Absolutely, आप जाकर देखिए, take your time, and of course it's different denominations, different kind of what do you say, perks. लेकिन it's totally up to you. It'll be great to get the support. लेकिन of course the main thing is हम interaction continue करेंगे, हम live stream continue करेंगे, और भी live streams होंगे for members
probably in the future. Absolutely. लेकिन हाँ, come on, let's get on to the transfer news because lots to discuss and बहुत सारे questions भी हैं यहाँ पर. Let's not forget if Nunez is being hyped, so is Alvarez. Yes, the price is different, but one is scoring in the Portuguese league and other in the Argentinian league. Very, very good point by Pratham. Absolutely. Ayush हम आएंगे absolutely. Frenkie de Jong पर भी absolutely. Then हार्दिक बोल रहे हैं, hi Ankit भैया, I think Zidane comes. His major problem would be handling ego of Neymar, maybe because everyone else could still be managed. यार मुझे actually अलग लगता है. You know, Zidane coming in, for me, Pochettino was never able to manage that. Tuchel, basically he's kind of almost at times micromanaging, तो वो थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी. हाँ, not with Neymar, but I think he didn't have, मतलब इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा था उसको PSG में. लेकिन remember, Zidane is a French legend, period. ठीक है, उतना ही नहीं, Zidane has managed huge egos at Real Madrid for a few years. और मेरे ख्याल से one of the most underrated managers in Europe. Honestly मैं बोलूँ तो, मतलब for whatever reason. तो I think PSG के लिए they needed someone like a Zidane जो एक कमांड करता है रेस्पेक्ट को, प्लस द फैक्ट दैट वो फ्रेंच है, लॉट ऑफ कनेक्शंस और यूरोप में काफी सक्सेसफुल है. आई थिंक PSG में इतना वीक इन वीक आउट वाला प्रेशर नहीं है जो Zidane कैन हैंडल वेरी वेरी वेल, और यूरोप इज की. दैट्स माय ओपिनियन. बट अगेन आप बोलिए, आपके लिए Zidane will he be a success? For me, I would say mighty again, absolutely. Maybe not winning the Champions League in the first season, but I think eventually he will get success for PSG. I really believe so. मतलब काफी लोग, मतलब including me, we say that PSG bought a lot of other oil clubs etc. As a Chelsea fan, मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है. 2003-4 में we should have won the Champions League. I'm really being honest here, right? ठीक है. 2004-5 में we should have won. 2007-8 में we should have won. हमने नहीं जीता था. Lot of question marks, and that is the thing. To get to the very top level in Europe, you need some amount of luck. You need some amount of basically consistency. एक patience भी चाहिए, काफी चाहिए. तो I think we kind of sometimes react early, including myself. So I think PSG they can do well. हाँ, maybe Mbappe का ego is main thing. वो PSG को manage कर रहा है कि Mbappe को manage कर रहा है, वो different होगा. That's the only thing. But I think being French it helps. Do you think England can go far if Gareth Southgate is replaced? Well, again, Nipun, मैंने बात किया था काफी सारे स्ट्रीम में. We have discussed about this, about England not doing well, and again we'll come back to the Nations League. We are doing a lot of watch-alongs, and we will restart it over the weekend. लेकिन हाँ, देखो, Gareth Southgate is not, as in good at all to watch in terms of his football. ठीक है, लेकिन the fact is, you can argue that वो effective है. But can he go far? Of course, to go to the, as in World Cup final and win it, you need a little bit of quality on the pitch as well to be shown. और मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हो जाए ना, it's just that balance that is getting incorrect. I have criticized lots कि यार वो ट्रिपियर को खिलाते लेफ्ट विंग बैक and all that, right? But देखिए ना, he should change that and just kind of try a proper left back once Ben Chilwell is fit. Maybe yeah, he'll get the solution. Or तब maybe the team will be different, but I think it might be too early right now to say that. But let's see. I still believe that. I don't think there's going to be any replacement अभी के लिए. Honestly, मैं बोलता हूँ that's a real thing. Let's agree to it, England fans. I always prefer Nkunku over Nunez, but I will be satisfied if we get Anthony from Ajax, young, talented, and Ten Hag knows him. Okay, चलो. तो यार quickly, यार आयुष भी काफी बार बात कर चुके हैं about Manchester United. So let's actually speak about Manchester United, and I am going to come to the other comments as well. भाई साहब, Frenkie de Jong to Manchester United, I think वो imminent है, year भी go होने वाला है. Yes, I am looking at that. वो भी definitely mighty, because lot of things happened in the last 24 hours. Again, it is about, I think मेरे ख्याल से जो बर्नार्डो सिल्वा की बातें है ना, it is basically taking momentum और ज्यादा बढ़ रहा है. I know that, वो मैं फिर भी बोलूंगा so. I don't think that might really happen. लेकिन I think the fact is Lewandowski इतने strongly बोल रहे नहीं भाई, बार्सा तो मेरा सेकंड घर है, मतलब जाना ही है. Indirectly लपोर्टा ने एक्चुअली बोल दिया है भाई, आप अगर ऐसा चांस ले रहे हो तो we will be backing you. So that is why probably one of the reasons Barcelona ने accept किया होगा. And of course 80 million euros plus add-ons, huge fee for Frenkie de Jong. लेकिन भाई जो भी नेशंस लीग देख रहे हैं, इस वीक भी देख लो, Frenkie de Jong is a difference maker in a team. Let's be real about it. As much as यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में है, आप बोल सकते हो कि you have number 8 already, लेकिन यार Frenkie de Jong जो दोनों चीज करते हैं ना, in terms of defense and attack, मेरे ख्याल से बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है. और the biggest factor है Ten Hag. और as per latest reports, yes, he is convinced about the Manchester United project.
or it might happen. Here we go, any moment for Manchester United fans. So congratulations in advance. Being a Dutch fan, मैं बोलता हूँ that is looking imminent and this is looking a really good transfer. लेकिन what about Donny van de Beek? Maybe उनके लिए इतना अच्छा नहीं होगा with him coming, but again I don't think Manchester United fans will care right now. It's about getting Frenkie de Jong. लेकिन what about Barca fans? I'll take in some comments from both the supporters क्योंकि यार Barca fans, how are you feeling about this? Bernardo Silva is not looking as likely as Frenkie de Jong going to Man United. So is there something missing there? Let's see. We should have won in 2009, but due to some extraordinary refereeing, we lost. Absolutely, those are no abhi. Absolutely, इसलिए मतलब वहाँ पर मैं बोलूँगा referee was at fault more than us here, but I absolutely agree. No problem. We have a cooler in the house. Thank you for joining. Ankit, can Zidane be a France manager, full time and part time as a PSG manager only in UCL? Possibility in my opinion. मेरे ख्याल से नहीं भाई. PSG में जो kind of pressure in Europe, I don't think वो थोड़ा amalgamate होना चाहिए. It should be basically full time for PSG, and of course he's coming back to management. Imagine him taking those jobs at the same time. I think it's a bit too much. Or Zidane, from what I see body language, he kind of needs the space and time. I think he can really do wonders. Remember, वो इतने manage नहीं किए teams apart from Real Madrid. So for him also it's a new deal. So I don't think getting two jobs together is commendable for me. भैया सच में कूलीबाली आ सकता है चेल्सी, उसमें आएंगे डेफिनेटली बिकॉज यस आप मेरा स्माइल देख रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग अ क्लू देयर. असेंसियो टू यूनाइटेड भी टॉक शुरू हुई है. यस वो भी है एब्सोल्युटली. फेब्रुशियो ने तो जिडान न्यूज को फॉल्स बता दिया, लेकिन आई एम लुकिंग एट आई फॉलो लॉट ऑफ फ्रेंच जर्नलिस्ट और मैं एक्चुअली बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ एंड आई हैव एक्चुअली बीन टोल्ड. Again, I can't say the source because at this point in time वो formal नहीं है, official नहीं है, but that is what I've been told, right? From a lot of French journalists who are really close to basically PSG. Simply put, what are the latest updates on Zidane? Ninja Gaming, I think you're late, but I just said that this is looking imminent. It is looking like mighty transfer, both in terms of it's actually happening and how good it will be, even in that manner, I would say. Imagine Dembele, Sterling and Pulisic in Chelsea front three, no finishing, only sprint. उस पर आएंगे भैया. Going for Sterling or Jesus, good for Chelsea. हाँ, absolutely. Next topic is that itself. Likelihood of Kunde to Chelsea. Kunde to Chelsea definitely. वो मतलब 6 महीने से बोल रहे हैं. Finally क्या है news? That is basically what we're going to discuss now. It will be unhealthy for Lewandowski to stay now because a lot of Munich fans have started to turn against him. And I know this is a fact. Actually, Pratham, बहुत ही अच्छा point है. But again, why is he so madly in love with Barcelona? Again, respect to Barcelona, respect to Lewandowski. लेकिन भाई, that is a little bit surprising मेरे लिए. Valverde kicked ding dong out of Spain. Let's go for some controversy. Okay. Hello to Suraj as well. Absolutely good to see you, brother. Hey, ये बढ़िया था नितिश. वो वैसे भी नहीं आता यार और उसके पापा वाला फैक्टर भी था सिटी के साथ. Okay. We need a number 6 also like Phillips. That's basically United fan Ayush saying Bissouma Neves for getting the best out of Frenkie de Jong. हाँ मतलब that is the next rumor जो शुरू होने वाला है along with the winger and maybe the defender. Zidane to PSG can be a hell of a move. I agree यार. I know a lot of people बोल रहे हैं maybe it might end up in a bad way. I think this guy commands respect. पहले मेसी फिर ग्रीजमैन अभी फ्रेंकी. भैया मेरे पसंद के प्लेयर्स तो छोड़ दे रहे. Let me see. Again, in terms of Griezmann, Messi, we all knew it's not going to happen. Like with Frenkie, I think things are different. Because the financial situation, Barca ki, it is far different. Trust me on that. लेकिन यार आई एम होपिंग एवरीवन हैज लाइक द स्ट्रीम. भूलना मत भाई, लाइक कर दो स्ट्रीम को और बाय चांस आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो. And I did cover about quickly, we have started a membership. So for those interested, certainly take a look and then decide for yourselves. ठीक है. हाँ, but Almighty Sports Plus पे अभी नहीं है membership, वहाँ पर subscription open है definitely. आपके हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से फ्री एजेंट के लिए जा सकते हैं? एरिक्सन और डेम्बेले. यार मुझे नहीं लगता डेम्बेले होने वाला है क्विकली बिकॉज वी आर चेकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी के लिए. लेकिन एरिक्सन लुक्स प्रोबेबल. मुझे वो भी लग रहा है यार. I don't see that happening to be very honest at this point in time. तो मुझे लगता है दोनों के लिए वीक में बोलूंगा आयुष. लेकिन the fact is आपने बोला यार you need a DM, you need a proper DM because Frenkie is not a proper DM, right? हाँ, maybe double pivot में खेलेंगे, maybe 3-4-3-3 खेलेंगे. That depends on Erik ten Hag's kind of management. लेकिन I think you still need a proper DM because यार Matic चला गया, he was your proper option.
If Nunez is off to Liverpool, whom would United sign instead of him? Okay, so United का वही है, मतलब डेम्बेले के न्यूज अभी आ रहे हैं, लॉट ऑफ अदर न्यूज आ रहे हैं. इंकुकू माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वही है एंटनी. द फैक्ट यार इतना इजी नहीं होगा फॉर यूनाइटेड टू कन्विंस नूनेज, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है, इसीलिए दे माइट गो फॉर बेसिकली स्टॉप गैप. और स्टॉप गैप माइट बी एन इजी ऑप्शन फॉर एंटनी बिकॉज एंटनी इज प्लेड फॉर टेन हाग. आप बोलोगे यार हर एक आयैक्स प्लेयर को नहीं ला सकते, इसलिए मैं आ रहा हूँ यार. मुझे लगता है टिम्बर टू यूनाइटेड से ज्यादा एंटनी टू यूनाइटेड मुझे लग रहा है अभी, एब्सोल्युटली. क्योंकि अगेन पाउ टॉरेस का ज्यादा न्यूज नहीं आया है. अगेन लॉट ऑफ अदर क्लब्स आर नॉट गोइंग फॉर हिम, so I am seeing that kind of possible as well. City will get Phillips and Kukurea, so City will have yeah, as in this is absolutely true about City, 100% I agree. Lekin we know Zidane can manage big players and make them work together, and the proof is in okay, fair enough. Ankit bhai, thoughts on Chelsea, interest in Jesus and Sterling as attacking option? चलो यार बहुत लोग Chelsea के बारे में बात करें, obviously being a Chelsea fan, let's quickly stick to that. हाँ, by the way, Nkunku because he's linked to Chelsea as Ayush, I'll just quickly comment कि एंकुकू कैन प्ले, लेकिन भाई ही इज नॉट योर आइडियल नंबर 9. ठीक है, मतलब आई नो दैट यू नीड अ नंबर 9. मतलब आई एम स्टिल सेइंग यार टेन हाग विल लुक एट रैशफोर्ड एंड मे बी लुक एट मार्शल एज वेल. मे बी देयर इज एन ऑप्शन, क्या वो देखेंगे. और देन एवरी ट्रांसफर इन वन विंडो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे बिकॉज यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू डोंट वांट टू काइंड ऑफ गेट अ प्ले फॉर द सेक ऑफ इट. हाँ, एंकुकू इज ब्रिलियंट, लेकिन अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी. लेकिन मैं बोलूंगा सो बिकॉज उन्होंने बोला है पीएसजी के साथ प्यार है उनका. But having said that, I think Anthony is more easy to get at this point in time. Again, Champions League football, that is something that Nkunku would want, I think, more than Anthony, I feel. Okay, तो यहाँ पर भाई साहब चेल्सी का क्या न्यूज है. मतलब ऑब्वियसली थंबनेल में मैंने क्यों डाला है कुलीबाली को. इज कुलीबाली कमिंग? आई थिंक दिस इज माइटी मैं बोल रहा हूं. और आई थिंक कुलीबाली टू चेल्सी, मैं अभी तक बोलते आ रहा हूं कि बारसा लुक्स माइटी, डिस्पाइट आप बोलोगे कि यार वी वांट बेसिकली कुलीबाली मोर. ठीक है, बट देयर आर बेसिकली लॉट ऑफ न्यूज इन द लास्ट फ्यू आवर्स, आई वुड से डेफिनेटली, कि हमने प्रॉपर किया है. और क्या किया है मैं शेयर करता हूं आपके साथ. और श्रेय बिग अप यार, अगेन चेल्सी फैन इन द हाउस. और अगेन पीपल डू लाइक द स्ट्रीम, वी विल कम टू अदर क्लब्स एंड ऑफ कोर्स टीम ऑफ द सीजन रिएक्शन एज वेल. सो रुकना, हम हमारा टीम ऑफ द सीजन दिखाएंगे प्रीमियर लीग में जो हमने पिक किया था. यहाँ पर क्या है ट्वीट, देखते हैं भाई साहब. आप देखो, Chelsea have sent Kalidou Koulibaly a 10 million euros net per season offer. He is valued at 40 million euros. अब imagine 40 million euros इनके लिए. और obviously for people who do not know, Todd Boehly is backing Thomas Tuchel to make the decisions. ठीक है, तो Todd Boehly is backing him. हाँ, Guardiola was our number one target in terms of the left center back position, लेकिन भाई Guardiola ने बोला है कि यार he is happy to stay at Leipzig. He is probably learning there, is growing there. So I think probably वो वहीं रहेंगे. Pau Torres, as much as I want, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा लाइकली लग रहे हैं मुझे at this point in time. And the next option was what? Bremer, वो इंटर मिलान imminent लग रहे हैं. तो Kalidou Koulibaly was the obvious option that was left to affordable है. लेकिन 40 million euros अगेन चेल्सी टैक्स, भाई 30 million से 40 million हो गया. ठीक है, एक चीज है. लेकिन 10 million नेट पर सीजन ऑफर आई थिंक हम टेम्प्ट कर सकते हैं. That is what it is. लेकिन what else? Let me actually show this as well. I don't know if you are able to see this. लेकिन there's no problem between Jules Koundé and Chelsea. He was essentially in London to finalize things 2 weeks ago. There's still structural elements behind the deal to be done. Chelsea are confident in making the signing for 50 to 55 million pounds. ठीक है, तो imagine करो आप सब लोग यार, everyone watching, again do let me know what you think. Kalidou Koulibaly to Chelsea, Jules Koundé to Chelsea. मैं बोलता हूँ दोनों ही mighty है this point, दोनों ही mighty है. इट इज क्वाइट पॉसिबल. आप देखो यहाँ पर 40 मिलियन यूरोस कितना होता है भाई, मेरा मैथ्स क्या है. 40 मिलियन यूरोस होता है, आई एम गेसिंग अराउंड कितना, आई डोंट नो, 30 मिलियन पाउंड्स, आई डोंट नो, माइट बी रॉन्ग, लेकिन हाँ 30 मिलियन पाउंड्स प्लस 50 मिलियन पाउंड्स हो 85 मिलियन पाउंड्स मान लो. वी आर गेटिंग टू डिफेंडर्स इन 85 मिलियन पाउंड्स एज कंपेयर्ड टू हम एक्सपेक्ट करते थे 70 मिलियन फॉर कुंडे जो इनिशियली टॉक्स थे. तो आई थिंक इट इज सर्टेनली एक पॉजिटिव हुआ है चेल्सी के साथ. लेकिन व्हाट अबाउट दैट स्टर्लिंग? नाउ a lot of things are coming through for Sterling and Lukaku of course. लेकिन वही है, it comes down to Lukaku. Again, as per reports, Lukaku to Inter looks like वो होने वाला है, लेकिन at what cost? Like let's see क्या options है चेल्सी के पास. So the thing is, हमने बात किया है as per the reports that we will get probably Bastoni or maybe Skriniar
और डेंजल डमफ्रीज. यस, डेंजल डमफ्रीज भी आ सकते हैं. What about you, Inter fans in the house? आप बोलिए, Chelsea fans in the house आप बोलिए. Because for me, अगर हम करते हैं कालिडो कुलिबाली जो आ रहे हैं सेरिया से कोइंसिडेंटली, और जूस कुंडे जो हम 6-7 महीने से बात कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी वी हैव थियागो सिल्वा. I think our centre half is kind of done almost. ठीक है, because we have Colville also returning from loan. लेफ्ट बैक में चिलवेल अगेन टचवुड की यार वो अच्छे फिटनेस के साथ है वापस सीजन में. राइट विंग बैक यू हैव रीस जेम्स, ब्रिलियंट. एस्पिलिक्वेटा का थोड़ा सा न्यूज अभी मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन I think agar Denzel Dumfries comes in, Reece James can be a right centre back option, or Tuchel looks like he prefers the 3 at the back formation, and that will continue, people. तो क्या बोलते हो आप लोग भाई? Denzel Dumfries, is he not the better choice, or let Lukaku go? I feel that is definitely doable अगर वो सच है. मतलब अगेन मैं बोलूंगा सो उसके लिए, because Denzel Dumfries यार he has been really important to Inter's cog. ठीक है, simply put. तो मैं थोड़ा सा I'm not really convinced as such, लेकिन हाँ I am certainly saying कि यार possible है, बट फिटमेंट के हिसाब से मैं बोलूंगा माइटी फिटमेंट होगा. डेंजल डमफ्रीज एक ऐसा बंदा है जो स्कोर करता है गोल्स, और हमें चाहिए हमारे विंग बैक टू स्कोर गोल्स एंड कंट्रीब्यूट मच मोर, and he is that guy. So Denzel Dumfries, imagine bhai, Denzel Dumfries, Reece James and Dembele, yes, Fabrizio I think no, Gab Marcotte ने बोला है यार Dembele to Chelsea is not likely, winger नहीं है and all those things Chelsea में, why do you need that? लेकिन भाई I think it's quite clear कि Dembele to Chelsea is more likely than any other club at this point in time, because I think PSG are concentrating on other things अभी के लिए. अगर रहेगा तो या तो PSG में रहेगा जाएगा, या तो चेल्सी में. आई डोंट थिंक वो बारसा में रहने वाला है, बिकॉज वाई अगेन मैं आने वाला हूँ बारसा में, बिकॉज देयर आर 2 न्यूज, डी मरिया एंड एस्पिलिक्वेटा के बारे में, वहां भी बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे कुछ और कमेंट लेते उसके पहले लोग मुझे पकड़ के पीटे. एंड यस, लाइक द स्ट्रीम यार, सब लोग लाइक करना मत भूलना. जैसे मैंने दिखाया, देयर इज अ लाइक टारगेट एंड देयर इज सब्सक्राइब टारगेट, सो लेट्स एक्चुअली follow this target, everyone. Let's try and do that. And of course, like I said, we have started membership as well for those of you who do not know. Jesus to Chelsea पे thoughts Ankit bhai. Okay, तो अगेन बिफोर कमिंग टू बारसा, यार मेरा ना यहाँ पर थोड़ा सा आई एम इन टू माइंड्स. आई नो मतलब कितना 40 मिलियन है, व्हाट आई हियर 45 मिलियन, आई थिंक इट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इन पाउंड्स. ठीक है, लेकिन यार yeah, he can play as a striker, he can play as a winger, he can play as a wide forward, but again हमने देखा था in the Champions League semi-final, he still misses those chances. And is he your man to start games? and आप expect करोगे 30 games a season to start? I don't think so. I know against a lot of popular opinion, लोग बोल रहे हैं भाई he's better than Sterling. भाई I actually disagree, man. I might be wrong. Again, it's an opinion. मेरा opinion ये है कि यार Sterling is more proven in the Premier League than Gabriel Jesus. और स्टर्लिंग समथिंग जो ज्यादा डायरेक्ट है, जो हमें चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऐसा नहीं कि गैब्रियल जेसस इज द प्योर नंबर 9 जो स्कोर करने शुरू हो जाएंगे गोल्स, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग एट हिम एज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला प्लेयर हु इज वेरी गुड ऑफ कोर्स, लेकिन आई रादर प्रेफर लाइक अ डेम्बेले than a Gabriel Jesus. I don't want like a player who can do bit of both. I think मुझे चाहिए एक प्रॉपर स्ट्राइकर, ठीक है, और एक प्रॉपर विंगर जो डायरेक्ट है, इंस्टेड ऑफ समवन हु डज बोथ. मतलब दैट्स जस्ट माय ओपिनियन. और मैं बोल रहा हूँ जेसस टू चेल्सी, इवन यार मैन सिटी टू चेल्सी कितने ट्रांसफर्स हुए इन रीसेंट टाइम्स मुझे तो मतलब याद ही नहीं है. चेल्सी टू मैन सिटी हुए ऑब्वियसली, लेकिन आई डोंट नो मैन सिटी टू चेल्सी. कमेंट करिए. तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग रियली स्पीकिंग. स्टर नो, ये बाय द वे ये स्टरीज थे ना मैन सिटी टू चेल्सी, बट दैट वाज अ गुड फ्यू इयर्स अगो. Or Mr. Barca leaving as well, talking about Barca and Chelsea. If you see, Lukaku was always interested in playing for Chelsea. After Frenkie move, our main target need to be DM signing. Absolutely agree. मैं रूडिगर चुआमनी पर एनालिसिस बनाया है, अच्छा आपको ट्विटर पर सेंड करूंगा, देख सकते हो. एब्सोल्युटली भाई, यश कोई नहीं, मतलब भेजिए आप. ओके, एब्सोल्युटली आई एग्री देयर. लेकिन हाँ, मार्शल इज लीविंग. let's see मतलब again lot of question marks है वहां पर, that basically Ten Hag, whom does he see as fit? मतलब should Manchester United panic and just buy a striker for the sake of it? मुझे लगता नहीं. He'll take his time. I don't think panic करना चाहिए अभी के लिए. मेन इंपॉर्टेंट है रोनाल्डो स्कोर कर रहे हैं भाई आपके गोल्स. Rashford might be change of attitude, he kind of contributes, he plays as a striker, who knows. Sancho might be in better form, ठीक है. Greenwood might got as an I don't know about Greenwood, that is like kind of बात नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन the fact is maybe just he's considered. Elanga will be a year older.
there are options there, upwards. I don't think Manchester United needs to panic. For me, yeah, DM is the main thing. I really feel that. Realistically speaking, the only possible minor signing are Frenkie de Jong, जो हमने बोला है, looks like mighty. टिम्बर, बिस्सुमा, वन स्ट्राइकर. ओके भैया, कुलिबाली ने तो बारसा के साथ पर्सनल टर्म एक्सेप्ट कर लिया था, बट अगेन यार मेंडी ने किया कुछ जादू. एज पर रिपोर्ट्स, अगेन मेंडी हमारे जो गोलकीपर है सेनेगलीज, ही हैज स्पोकन एंड इट सीम्स वहां पर कुछ हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट कि हम एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं 40 मिलियन यूरोस का माइट जस्ट टेम्प्ट नापोली टू चेल्सी दिस टाइम अराउंड एज कंपेयर टू लास्ट टाइम अराउंड. कुलिबाली, डिलिक्ट, कुंडे, डेम्बेले, जेसुस, व्हाट अ ग्रेट विंडो दिस विल बी. ओके, तो डिलिक्ट का क्विकली मैं बोल दूंगा क्योंकि श्रेय ने बोला, और यस बारसा फैंस वेटिंग, मैं आऊंगा एंड कमेंट्स प्लीज वेट, आई विल कम टू देम. लेकिन यार डेफिनेटली मैं बोलूंगा डिलिक्ट वाज वन, मेरे लिए वन ऑफ द साइनिंग मैं चाहता था. आई नो लॉट ऑफ पीपल से दैट डिलिक्ट इज पेनल्टी डिलिक्ट, ठीक है, वो दे देते पेनल्टीज, लेकिन भाई मुझे लगता है इन द प्रीमियर लीग ही समवन हु कैन डू रियली वेल. लेकिन क्या वो आने वाले चेल्सी? मैं बोलूंगा वीक श्रेय, इस सीजन में नहीं, फ्यूचर में यस मे बी एब्सोल्युटली. कुलिबाली कैन बी द स्टॉप गैप फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, फिर डिलिक्ट आए, दैट विल बी ब्रिलियंट. दैट वाज व्हाट सक्सेशन प्लानिंग इज कॉल्ड, ठीक है. तो मुझे लगता है दैट इज मोर लाइकली अबाउट कुलिबाली कमिंग विद कुंडे कमिंग एंड डिलिक्ट कमिंग 2 years लेटर. लेकिन डिलिक्ट इस विंडो में नहीं लग रहा है बिकॉज अगेन कियलिनी इज not there in Juventus from what it seems like. तो मुझे लगता है it will be extremely expensive to get Lilik अभी. और हमारे पास भाई, हम कुंडे और कुलिबाली को मिलाकर 85 मिलियन पाउंड दे रहे, तो हम नहीं दे पाएंगे Lilik के लिए. वो अकेला 85 मिलियन I think मांगेगा, like from Juventus. So that will not be possible. Jesus as well, again 45 millions. I'm not kind of seeing there that kind of being so likely, but again I might be wrong. If Tuchel wants him, I'll back Tuchel. लेकिन Dembele I would definitely see. I hope that वो खेल नहीं रहा है गेम. There was also Lilik to Chelsea, absolutely, वो मैंने कवर किया. Just Koulibaly, कुंडे, Lilik, चलो मैं I just covered that. Start, bench, sell, Iker Casillas, Navas and Courtois. Come on, bhai, come on. You know my thing. I've spoken about this enough, but I think being a Chelsea fan, मैं तो बोलूँगा भाई sell Courtois as much as he's brilliant last season and a half. लेकिन इकर कसियास यार गोट है मेरे लिए. डेफिनेटली काफी अंडररेटेड है फॉर व्हाट ही इज डन विद द क्लब एंड कंट्री एज वेल. नवाज विल बी प्रॉब्ली ऑन द बेंच. हाँ, ही विल बी हैप्पी बीइंग ऑन द बेंच कंपेयर्ड टू इकर कसियास. हमें सब याद है अंडर जोसे मोरिन्यो व्हाट हैपेंड विद इकर कसियास, राइट? दैट्स व्हाई बास्टोनी इज स्टेइंग एट इंटर. यस दैट्स व्हाट. हाँ, तो मैं इसलिए बोला था डेंजिल डम्फ्रीज हो सकता है वी माइट बी एबल टू टेम्प्ट इंटर. द फैक्ट दैट बास्टोनी नहीं आएगा, स्क्रीनियर आई थिंक आर्गुएबली ही इज द बेस्ट डिफेंडर फॉर इंटर. तो मेरे ख्याल से इट बी अ मिस्टेक अगर इंटर लेट स्क्रीनियर go. So that is why I'm saying Denzel Dumfries might just be available. I'm just putting it out there because Darmian, I know वो थोड़ा stop gap है and all those things. At least for the timing वो शुरू कर सकते हैं until they get a new right back. I don't know. I'm just putting it out there. बास्तोनी कहीं नहीं जा रहा. अंकित भाई staying at Inter. चलो good है, good absolutely. इसलिए मैंने बास्तोनी के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, Inter fans especially. लेकिन हाँ, Barca fans in the house. Okay. यार, what about Aspilicueta? What about Di Maria? What about them? Bhai Sahab, there is some news. So let's actually share the tweet again. Simon Phillips ने शेयर किया है यहाँ पर. साइमन फिलिप्स ने शेयर क्या किया भाई? किधर गया विंडो वापस? चलो ये रहा. और भाई यार काफी लोग देख रहे हैं, होपफुली सब लोग लाइक कर दिए. लेट्स गेट टू 250 लाइक्स और यार सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो ये है, Chelsea will hold more talks with Cesar Azpilicueta after his international duty. Barcelona want him but do not want to pay a fee. अब यार भाई फ्री में कैसे मिलेगा भाई आपको? भाई उसका ट्रिगर हो गया है 1 साल एक्सटेंशन का, तो हाउ कैन ही गेट अवे ऑन अ फ्री? Tuchel has made it clear that he wants Azpilicueta to stay. He had been preparing to say farewell to Chelsea. So that is basically 36 का आंकड़ा हो सकता है यहाँ पर. लेकिन knowing Azpilicueta, I just feel that he might just stay because again हम काफी लिंक हुए थे. I think with Serginho Dest, with Hakimi again. लेकिन यार वो likely नहीं लग रहा. मुझे क्या लग रहा है कि यार Azpilicueta might just stay at least next 6 महीनों के लिए. He might stay and he might make a move in January for as a deal for free. That is what मुझे लग रहा है. मतलब again आप बोलिए Azpilicueta to stay at Chelsea or Azpilicueta to move to Barca. Or talking about Barca, what about Di Maria? Di Maria now is looking more and more likely. Di Maria, और उसने बोला है भाई Real Madrid का मेरा खत्म हो गया है. I used to play for Real Madrid. And I don't know how Real Madrid fans feel about this. लेकिन I think Xavi has spoken to him और that is looking very likely. इसलिए मैं बोल रहा हूँ Dembele leaving Barca is mighty. Simply put, right? Absolutely. तो वो एक बहुत ही बड़ा होने वाला है move for
बारसा इन माय ओपिनियन, बिकॉज अप फ्रंट में अगर आ जाते हैं दो बहुत ही तगड़े इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस that you have what's his name Lewandowski or Di Maria, and that will be brilliant. Imagine a Ferran Torres playing next to them, or Ansu Fati playing next to them, or behind them you have Pedri, Gavi, bhai, and of course De Jong ja rahe, but who is coming in? That is what the interesting part is. Will they be able to get Bernardo Silva? I personally say that is so, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार एक और न्यूज आई है बारसा के साथ, और ये डन डील हो गया बारसा फैंस. आई डोंट नो व्हाट यू फील अबाउट दिस. काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं इस पर, लेकिन हु नोज. डेम्बेले भाई इंजरी से वापस आकर अच्छा किए थे, बट व्हाट अबाउट दिस गाय? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी बारसा गाय. सर्जी रोबर्टो हैज एक्चुअली साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. सो कैन ही बी योर मिडफील्डर दैट यू आर लुकिंग फॉर? याद है आपको सब लोग को, ही वाज प्लेइंग राइट बैक. और काफी क्वेश्चंस आ रहे थे यार ये राइट बैक में क्यों लाया जा रहा है, लेकिन फिर वो इंजर हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स. काफी इंजर्ड थे, लेकिन can he play a backup to Busquets until Barca को मिला एक full time kind of CDM? Can he kind of cover for Busquets? I'm just kind of giving as an option. Can he transform himself again? हाँ, मतलब reliable नहीं है, लेकिन as a backup I don't mind, because कैसी आ रहे हैं of course in Barca, Gavi and Pedri can play. And what about Gavi? Gavi का भी बहुत ही बड़ा news है that yes, Gavi is going to extend, and I know काफी Liverpool fans will be disappointed, but looks like Gavi is going to extend. I think it's a 4 or 5 year deal. That is something that will be great. थोड़ा negotiations चल रहा है, but I think it is imminent as well. So that is great news for Barca fans. But यहाँ पर और comment ले लेते quickly, and till the time you like the stream, and of course share it if possible. Okay. मतलब again good shout. I don't follow him much, Ayush, लेकिन from the MLS to Chelsea, मतलब Chelsea को क्या चाहिए आज के दिन में? We need to replace a Lukaku. We need to replace that experience figure, in my opinion. इसलिए मैं बोल रहा था भाई Lewandowski अगर available होते तो I will bite your hand off. लेकिन वो available नहीं है. Clearly he doesn't want to come to Chelsea, or rather he wants to go to Barca. तो मुझे लगता है भाई Tuchel might just play. I know Gabriel Jesus maybe Premier League ज्यादा proven है, इसलिए maybe we are linked so strongly compared to other strikers. लेकिन हाँ, I would rather Tuchel invest in Broha and time और एनर्जी अभी के लिए, और इन्वेस्ट इन बेटर विंगर्स हु कैन स्कोर. और इसलिए हम लिंक हो रहे हैं विद स्टर्लिंग, विद बेसिकली यू हैव डेम्बेले, इतने सारे एंटोनी और रफीना, व्हिच प्लेयर विल कॉस्ट मोर एंड हु इज परफेक्ट फॉर मैन यूनाइटेड. ओके, यहाँ पर ना आई थिंक रफीना का लीड्स टैक्स लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीड्स के साथ ऑब्वियसली मेजर राइवलरी है with Manchester United, ठीक है. Plus the fact that Leeds are in the Premier League अभी, तो I think Raphinha will be far more expensive, not far more, चलो थोड़ा expensive होंगे than Antony in my opinion. हाँ, Antony has been doing brilliantly in Europe, but I think the fact he Ten Hag है, वो I think he can help there a little bit. So I think Antony will be cheaper a little bit. Maybe Antony would come for, in my opinion, about 40 million. Raphinha might come for about 45 to 50 million. वो मेरा opinion है. Let me know what do you think, Ayush, or every Man United fan there. बारसा, लेवा, कुलीबाली यार मैं चेल्सी मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मेरा कॉल है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. डी मरिया यस, कैसी, क्रिस्टियनसन, अलोंसो यस, दैट लुक्स इमिनेंट एज वेल. सो लेवेंडोव्स्की, डी मरिया, कैसी, क्रिस्टियनसन, अलोंसो, बहुत ही बढ़िया विंडो भाई. मनमोहित, मैं तो बोल रहा हूँ आप तो टोटली मनमोहित हो गए होंगे, लेकिन हाँ, डिलिक्ट विल मोस्ट लाइकली एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट. यस, आई एग्री विद देयर. अभी के लिए रिलीज तो 130 मिलियन, इमेजिन भाई. वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नहीं आने वाला. Why Chelsea? हाँ, लेकिन वो रिलीज क्लॉज नेगोशिएट कर रहे हैं हम, तो होपफुली वील स्ट्राइक अ डील मे बी फॉर 2 years डाउन द लाइन. हो सकता है, लेट्स होप. ये मैं ले लिया. और Zidane to PSG हैपनिंग, लुक्स लाइक इट. राजेश भाई, लुक्स लाइक अगेन, मतलब हाँ, मुझे पता है कि काफी रिपोर्ट्स बोले इट्स अबाउट हिम not being confirmed, लेकिन यार at the same time मैं काफी फ्रेंच जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ, and I've been actually been told that this actually is looking more likelier than what it was definitely. तो मैं बोलता हूँ ये mighty लग रहा है अभी. Just imagine Dembele playing game with Chelsea like Mbappe did with Real, and last moment he joined Manchester United instead of joining Chelsea. अरे भाई आयुष ऐसा मत बोलिए please. Big up to 8744, big up bro. Nice to see you as always, and people who follow him. Big Barca fan. Di Maria will come to Juventus, 90% deal done. नहीं, मुझे नहीं again, मतलब let's see. मतलब मैं I'm not for him going to Juventus or Barcelona. मैं तो खाली guess कर रहा हूँ from report, from basically जो पढ़ रहा हूँ, from इतने सारे journalists saying Di Maria to Barcelona looks more likely at this point in time than to Juventus, even though वो Real Madrid के खेले, because वो आए और बोले about him having played for Real Madrid in the past. It is a giveaway for me. Possible attacking trio for next season: Sancho, Ronaldo, and Antony. हाँ,
डेफिनेटली मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब वो लग रहा है मुझे एब्सोल्युटली। अगर वही एंटनी का थोड़ा, मेसन ग्रीनवुड का थोड़ा है क्वेश्चन मार्क, वहां पर देखते हैं इफ टेन हाग इज ओपन टू काइंड ऑफ गेटिंग हिम टीम, और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब इज ओपन, देन माइट बी डिफरेंट, एंटनी मे नॉट कम, और दे माइट फोकस ज्यादा ऑन द राइट बैक ना। लॉन्गले एसपी स्वॉप नहीं भाई, लॉन्गले तो नहीं जाने वाला। इन माय ओपिनियन इफ चेल्सी गेट डेम्बेले दे शुड कीप लुकाकू और गेट अ नेशनल नंबर 9। डेम्बेले's मेन एट्रीब्यूट इज क्रॉसिंग। राजेश, मैं मतलब आप सुने हो भाई, मैं लुकाकू के लिए बोल रहा था भाई चेल्सी को, और बात करनी चाहिए, टुकल को बात करनी चाहिए, एंड बोथ शुड बी ओपन माइंडेड एंड स्टार्ट अफ्रेश एट चेल्सी, लेकिन आई डिसएग्री मैन। अभी बोल रहा हूँ भाई मैं, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 72 आवर्स में, लुकाकू just grow up or buzz off, simply put, or buzz off is what it's looking like. It is a bad kind of association जो किया है, नाटक किया है, और you can say that लुकाकू ने बोला भाई मैं इंटर को प्यार करता हूँ, और मुझे एक्चुअली क्लियर था कि यार चेल्सी मुझ पे टेम्प्ट होगी, मैंने अपना वैल्यू बढ़वाया अपने एजेंट से, 100 मिलियन में गए, मैंने काइंड ऑफ मेड द मूव, एंड देन आई डिड व्हाट आई डिड विद स्काई इटालिया, और मैं वापस आ रहा हूँ, बट आई नो इंटर फैंस भी नहीं चाहते उसको, बट आई वुड से गुड रिडंस होगा अगर जाए तो। Absolutely, यार भाई ऐसा कुछ बवाल नहीं मचा in terms of performance भी। Barca looking to bring in Lewa and Koulibaly as main priority in defense and attack, and fullbacks Barca looking to bring Aspi, Alonso, and eyeing Silva if De Jong will leave. Okay, interesting. मुझे again Koulibaly और Schlotterbeck, well again Schlotterbeck on form, Koulibaly on experience, तो मैं तो personally मैं जाऊंगा Koulibaly के लिए absolutely। He should join Juventus। हाँ मतलब what he should, that is debatable, लेकिन क्या लग रहा है, मतलब I think it's a giveaway from him। I'm just kind of reading kind of what उसने किया है, लेकिन as a Barca fan I want Aspi to stay in Chelsea। I don't want many 30 age above uncles। अरे भाई it's not about the age, it's more about he's not your typical right back जो आपको चाहिए in terms of attack, so that I can 100% agree with Sangiri भाई। And by the way everyone here, do like the stream, do not forget, देखते हैं कितने likes हुए यहाँ पर भाई, come on, there are over 70, almost 75 people watching, ठीक है, let's actually get the likes double, एक just a press of a button, let's get the likes up, क्योंकि यार automatically YouTube बताता है, और every like helps, and like I said we have started membership as well for those of you who might be interested, it'll be brilliant, लेकिन हाँ take your time, take a look at the perks, and of course हम बात कर सकते हैं DM if required, and then we can take it further, लेकिन absolutely will be welcoming that। Or yes, of course, if you want to kind of prioritize on certain comments, there is an option of super chat or Almighty Blues FC। Not that मैं बोल रहा हूँ, the fact that क्योंकि इतने सारे comments में miss किया हूँ, इसलिए I have to say that। Barca looking to bring in Lewa and Koulibaly as main priority। हाँ ये मैं ले लिया था, looks like we already have Dani Alves and PK, we don't need another aging defender, to be honest। Exactly, तो मैं बोलता हूँ in a strange way, that is what you can say, right? Absolutely। Or yes, absolutely, we have our first member, Darren। This moment I will certainly remember, because yes, our first member is Darren, absolutely brilliant to get in Darren। Darren, kaise ho? And I'm hoping you're looking forward to the Chelsea season, because the biggest part is it is of course Todd Boehly के पास था द चाबी जो था ना, और वो बता दिया है भाई टूकल आप जाओ भाई, आपको जो चाहिए जाओ, हम बैक करेंगे। ओनली प्रॉब्लम इज टाइमिंग। ऑफिशियली द ट्रांसफर विंडो इज ओपन, लेकिन हमारी टाइमिंग भाई, टाइमिंग इज अ बिग डील, और लेट्स सी इफ वी आर एबल टू डू दैट। बट अगेन great to have you as a member of the Almighty Blues family, and it'll be interesting what membership we have taken। But again, people who do not know, there are different slabs, so do check it out, और काफी interesting slabs है, आप देख के पढ़ना, और if you don't know you can DM me what it is। Ankit bhaiya, why is everyone slacking Darwin? That guy is cool but clean। Okay, ग्रेट कमेंट यहाँ पर। मैं इतना ही बोलूंगा, इज अ कोल्ड ब्लडेड किलर इन फ्रंट ऑफ द गोल, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट एज अंडर क्लॉप टू कम। ठीक है, आप बोलोगे यार मे बी, हाँ वेरी वेरी फेंटली एम्बापे लिंक हुए थे, वेरी वेरी फेंटली हालैंड लिंक हुए थे इन द पास्ट, ऑफ कोर्स दे हैड अदर लिंक्स एज वेल, साडियो माने गोइंग आउट टू बायर्न व्हिच लुक्स वेरी वेरी लाइकली। अभी यार डार्विन नूनेस कमिंग इन विल बी द ग्रेट टाइमिंग, क्योंकि यार अभी भी बॉबी फर्मिनो इज प्लेइंग लिवरपूल, डियोगो जोटा ने prove किया as a striker, so I think Luis Diaz owns that left wing position। Harvey Elliott is back, who's kind of fit अभी, who right wing में खेल सकते हैं, they have Fabio Carvalho who can also play as an attacker, so इतने सारे options है, so I think he can get mentored under Klopp and Firmino for maybe half a season, and maybe आप देखोगे next calendar year से he might start, so for me it's worth the investment। हाँ थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन यार again it's about that Mbappe and Chouameni situation between PSG and Real Madrid, थोड़ा तो बनता है भाई। और people out there, again यहाँ पर मैं बोलूंगा लिवरपूल की थोड़ी बात कर लेते हैं, now that we are talking लिवरपूल। लिवरपूल की ऐसे बात है यार, मैं बोलता हूँ lot of people say लिवरपूल यार Klopp creates these players from nothing,
I agree. He's a fantastic manager, right? I don't have any qualms about saying that. ठीक है. लेकिन the fact is, मतलब again आपने देखा होगा lot of tweets on Twitter कि यार they had bought Alisson. I know Coutinho के पैसे से काफी था. Virgil van Dijk, Alisson, if I'm not wrong, is the second most costliest goalkeeper. Virgil van Dijk is the costliest defender, if I remember right, at this point when he was kind of bought. Then obviously, you know, they have bought obviously Naby Keita in recent times. वो भी काफी expensive थे. Luis Diaz was not very cheap. हाँ, thanks to Tottenham थोड़े cheap थे, लेकिन हाँ, it was not very cheap as well. And of course, you have Abhi potentially breaking the record for them, that is Liverpool, for Darwin Nunez. तो यार अगर ये होता है ना, I would say Liverpool have also been buying lots. लेकिन again, it's about, I don't know, for some strange reason, the pundits or the media, you know, याद नहीं रखती. It's all about the oil clubs, and they kind of get an unfair deal जो है oil club so called. I think Liverpool के लिए it can be only kind of, you know, good that they get a player like this. लेकिन let's be honest, उन्होंने भी काफी spend किया है. And talking about bias, I don't know, man. What do you think about Premier League team of the season? The PFA team of the season. What is that, man? What is that? You have Heung-min Son, and that is the news. मतलब सब लोग को पता है. Heung-min Son has got the highest number of goals in the Premier League in such a tough league, जहां पर Tottenham struggled for half a season without any penalty goals. और वो not only was he not nominated in PFA Player of the Year, but he was not in the PMF Team of the Season. Are you serious? Are you serious? And मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, again, people might disagree. पता नहीं आप लोग याद है नहीं, we did this actually a month ago almost. जैसे खत्म हुआ था ना just Premier League, not a month ago, ज्यादा बोलो, चलो 2-3 हफ्ते पहले किया था हमने. तो this was about, we kind of discussed together. और मुझे याद है, just to give a shout out as well, Sadiq bhai was in the house. We had Sports Kappa in the house. We had David in the house, and we had, if I remember right, was it Loudmouth Football, and of course Almighty Blues. तो हम 5 मिलकर, उतना ही नहीं, आई थिंक श्रेय भी थे, if I remember right, और चैट में काफी लोग थे. ठीक है, बहुत सारे लोग थे, और हमने पोल लिया था, हमने डिस्कस किया था, और हमारा टीम ऑफ द सीजन जस्ट ऑन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी पुट टुगेदर was this. I'll just show you now what is our team of the season in the Premier League. Again, आप लोग अलग फील करते हो तो let me know. लेकिन ये okay, so let me actually show it again. I think I kind of closed the wrong window. लेकिन हाँ तो ये रहा. ठीक है, तो this is our Premier League team of the season. I don't know what you all think. अभी जो PFA team of the season officially pick हुई है, उसमें आप देखिए क्या डिफरेंस है. Cancelo is there, Virgil van Dijk, if I remember is right, but हाँ, उन्होंने रूडिगर को पिक किया है, हमने सिल्वा को पिक किया था, maybe because of the loyalty of Chelsea, I don't know, just putting it out there, and hats off to रूडिगर भी. लेकिन I think arguably सिल्वा ने काफी किया था, which maybe, you know, neutrals did not see much. लेकिन हाँ, I would say that दोनों ही kind of did very well for the season. Reece James, yes, हमने Reece James को पिक किया, लेकिन I have to talk about this bias. I know I kind of love the way that Trent plays. I have to be very honest about it. हाँ, Trent does brilliantly. I don't know, आप बोलिए भाई, should Trent have been in the team? Absolutely आप बोलोगे. लेकिन did he not have a lot of mistakes as well season में? Reece James, he was injured, हाँ, लेकिन when he played, he was like, wow, that was the level that Reece James was at. And generally मैं बोल रहा हूँ भाई, जो official team of the season है, उसमें क्या difference है? उसमें remember they have picked Sadio Mane, very good player, very good season, no two ways about it. Salah, chalo, that even we agree. Thiago had a brilliant end. मतलब arguably इस calendar year का one of the best midfielders of the season होगा इस calendar year का. लेकिन पूरा season I disagree with Thiago. Then in terms of comparison to Rodri मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, nothing otherwise, right? Then obviously Van Dijk हम agree करते हैं. Trent, मैं kind of, I think, just to kind of let you all know before Liverpool fans, you know, kind of get agitated, I had personally picked Trent over Reece James. Yes, me being a Chelsea fan. लेकिन I think we went with the majority after the discussion. हम किए थे Reece James को because of Trent's mistakes. और Reece James when he played was a difference maker in Chelsea. ठीक है, तो 5 और Alisson we agree. ठीक है, तो the official team of the season में which Premier League कौन जीता भाई Premier League? I know Liverpool have been brilliant, one of the best sides of Premier League ever. हाँ, I agree there. लेकिन भाई आप official team of the season दे रहे हो Premier League का, प्रीमियर लीग जीती है मैन सिटी, और आप डाल रहे हो 3 मैन सिटी प्लेयर और 6 लिवरपूल प्लेयर्स. ये बायस नहीं तो क्या है भाई? मतलब अगेन नथिंग अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन दिस इज अ क्लियर बायस. आर दे, मतलब दिखता नहीं उनको, मतलब हाउ कुड दे पिक
Thiago or Rodri over the entire season is questionable for me. Matlab, in terms of the season, I'm not talking about the player. Of course, you would pick Thiago, lekin as per the season, entire season, मैं बोलूंगा Rodri was better. And it's very strange that they have picked basically, Sadio Mane over Son. Well, I agree, Ronaldo being there. I agree. I'm talking about Ronaldo. Big up to Solo and of course the Man United agenda. We will be live tonight at 11:30 there to discuss this as well in detail. But absolutely, great to have Solo here and of course other Man United fans and of course Liverpool fans. No offense, but for me, Son had to come. Son had to come in absolutely. आप बोलिए, आपको क्या लगता है? मतलब was Son robbed yet again? Yes or yes? That is the option, simply put. Lekin comment on this team of the season. What do you think? Chalo, I will kind of move away because मैं सिर्फ share कर रहा था, react कर रहा था and kind of refreshing what हमने किया था already. अरे ये कौन है मॉड भाई, कौन है मॉड? यार कौन ब्लॉक कर रहा है? प्लीज डू नॉट डू दैट. लेट्स नॉट मॉड्स. जस्ट क्विक शाउट आउट, अगर आप कर रहे हो सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज if you are doing it, do give a warning. Do let me know before blocking anyone. So let's not block. और मैंने देखा था again mods यार काफी हेल्प करते हैं, really helpful mods. लेकिन यार let's not do this. Let's actually be little lenient. It is a fan channel for all to see. यहाँ पर banter accepted है, banter accepted है. हाँ, गाली गलौज ज्यादा मत करो चैट में, definitely that is not accepted. लेकिन banter is accepted. So let's be a little bit lenient. So give a warning to the user, give a DM to me, and then we will look at it. Maybe you can make the person, I think, inactive for a few seconds, timeout for a few seconds. That's all you आप करो. लेकिन warning दो यार, definitely. Or of course, yeah, Mikhail to had to become a member. Man, Mikhail is already a member, but means a lot. Mikhail even formally becoming a member of the channel. Mikhail, for those of you who do not know, brilliant Chelsea ultra that he is. He knows his stuff inside out. He writes for Chelsea Perspective. Big up to my brother Chelsea Perspective as well. Of course, again, Chelsea Perspective, in case you're not following or missing out a lot, it's always linked in the description below. And Mikhail, if you're not following or missing out a lot, because this guy writes a lot of good stuff. And आजकल तो यार ट्वीट्स भी बहुत ही अच्छे ट्वीट्स आ रहे हैं मिकाइल से, तो आई फॉलो मिकाइल वेरी क्लोजली. पीपल डीएम मी, आई लेट यू नो वेयर टू फॉलो मिकाइल, बट बिकम मिकाइल. एंड ऑफ कोर्स मिकाइल, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द न्यूज़? हमने न्यूज़ किया है अबाउट Koulibaly, the offer that has gone through 40 million euros, 10 million net euros. Is it a bit too much? Along with Koundé, not bad. Dembele coming in from what it seems like. Are you in for Jesus? I am still saying so for Jesus. I am not convinced about that. लेकिन अच्छा चलो कोई नहीं यार, काफी क्वेश्चन मिस किया है. अगेन फॉर पीपल, मतलब आई नो काफी लोग हैं, काफी कमेंट्स आते हैं. आई टेक द क्वेश्चंस जो रेलेवेंट है ऑन द टॉपिक दैट आई जनरली स्पीक, or I star them and take it later. For those who want to prioritize, again, shout out to members, but shout out even to the super chats. अगर आप करते हो, great. ये नहीं भी कर पाते हो तो we'll try and take it later. So yeah, please we remain patient and do not forget the like button. Like I always see. चलो विप्रा, आपका कमेंट दे रहा था. Nunez to Liverpool would be good for competition because City got Haaland. On the other hand, United won't give the competition which Liverpool would give to City and in the Premier League. I agree. Unfortunate for United. Even for Chelsea, मैं बोलता हूँ यार, even Chelsea would have gone for him. I think he would have preferred Liverpool. Let's be honest about it. Spurs का transfer update भाई, honestly Spurs का आज इतना transfer update है नहीं सिद्धार्थ, लेकिन again you're doing a madness. मुझे ये last यही पता था कि Kostic is one of them that you might still go for despite Perisic coming in, लेकिन I think a lot depends कि कौन बाहर जा रहा है. And of course Bastoni staying now is interesting. I don't know who's coming to Spurs as centre half. आप किसको देखना चाहेंगे? ये interesting रहेगा absolutely. तो मैं I'll come back to that for sure. Liverpool spends big when they want a specific player like Alisson, Wojia. They spend well. They spend very well. And you will, absolutely. Jude Bellingham will be a possibility next summer. Who knows? They go big when they are sure about a player. They even want big for, exactly. तो CR7 का सीजन भी तो not good ना बल्ला यार. अमृत, अच्छा imagine अगर CR7 नहीं रहते यूनाइटेड में, what United would have got. I think उनको यूरोप ही नहीं मिलता, and that's a reality. I think CR7 हम काफी बोलते हैं because of him, Ragnick could not play the pressing style and all that. लेकिन भाई चैंपियंस लीग में we remember how he's done brilliantly, absolutely brilliantly. और प्रीमियर लीग में तो I know the PFA team of the season, but I think again he's right up there with the goals. So without his goals and without David De Gea's saves, I don't think वो रहते. हाँ, माने had a brilliant calendar year, लेकिन entire season, मतलब अगेन रीसेंसी बायस में बोलता हूँ, मीडिया स्पेशली भाई,
You have to take the entire season. Come on, I know he had a brilliant calendar year for club and country, लेकिन for the entire season मैं बोलूंगा Mane was questionable. काफी Liverpool fans मुझे याद है were saying that Mane should be out of the starting 11. I don't know if you remember Amrit, but again big up to Amrit and big up to Liverpool generally. मैं तो बोल रहा हूँ Son being not there is a robbery, daylight robbery. I just hope the deal gets done ASAP. Every other club is doing their business. Exactly, man. I hope you're not late. Okay, Trent is more for midfield or right mid or right wing back type. James is more stable defensively. हाँ, मतलब वही है, लेकिन interestingly he plays right back for Liverpool. It's just about England not to be able to fit him well, right? ये मैंने लिया था. I hope यार mods थोड़ा easy ले लियो. कोई नहीं, question missed, चलो ले लिया. Close to 100 likes. Come on, let's get to 200 likes, people. Easily we can get there because we are going to be talking more transfer news absolutely और कुछ general news भी हम बात करेंगे. In place of Mane, there should be Son. In place of Thiago, there should be Rodri or Fabinho. Yeah, I agree that. I would agree that Rodri definitely. Fabinho again, he had a few questionable moments. Rodri, I think, a brilliant season, man. Ankit bhai, सुनने में आया Chelsea is preparing a bid for Rice is number one priority for Tuchel. What do you think? Now that is a big deal. I know वो एक question mark है. मैं तो बोलूँगा बिसुमा. डम्फ्रीज की सुनो. हाँ मतलब मैं डम्फ्रीज की बारे में बात कर लिया already. So my deal is obviously I'm saying still it's so because Dumfries, what an important player he is for Inter in the last season and a half, right? But again, the difference being that I think the fact that Reece James can play right centre back or Tuchel prefers to keep three at the back, I think Dumfries is a great option. Fitment wise, mighty. But doability wise, I think it's so. I think it's really so. Dumfries plus cash, definitely bring it on, man. I would say. लेकिन हाँ, Rice का I would rather say इसलिए मैंने react नहीं किया था when आयुष ने बोला था about Bissouma. मुझे लगता है that we might tempt Bissouma and Sangare both possible क्योंकि वो that might come for Rice, that might be the thing. It'll be either or. I agree there. So big that अगर Rice आएगा तो Rice आएगा, नहीं तो we might go for 2 DMs. We might actually do that क्योंकि मुझे नहीं लगता. I know as much as I want Billy Gilmore to stay क्योंकि वो एक option देता है for flexibility, someone who kind of can even orchestrate very well. लेकिन again he's not a starter और मुझे लगता है he wants to play first team football. He's not got it for the last 12 months enough. That is why he might again go out on loan, one last loan, I guess. Like, Jorginho might just leave, I feel. Liverpool win 2 cups, play UCL final and finish title race second, brother. City have a better squad, but they have 1 trophy only. Amrit, I'm not saying that Liverpool had a worse season or something. Definitely. What I'm saying here is kafi, like part of the media, let's be honest, again, nothing against Amrit or any Liverpool fan or any club in general. लेकिन मीडिया इट्स अ रियलिटी भाई. मीडिया इज लिवरपूल बायस्ड. इन इंग्लैंड इट इज अ फैक्ट. आप देखो अगर 4 लोग रहते हैं पंडित का जो होता है टीम, उसमें से 3 तो लिवरपूल से होते हैं और लिवरपूल के लिए खेले होते हैं. वो रियलिटी है भाई आज के दिन में. और वो बायस होता है, सबकॉन्शियस होता है. ऐसे नहीं बोल रहा जानबूझ के करते हैं. बट यू सी यार पीएफए टीम ऑफ द सीजन, आई नो पीएफए टीम ऑफ द सीजन इज मोर बाय वोट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? बट अगेन एट द सेम टाइम how can you pick 6 in a PFA team of the season when you're picking as in players from the Premier League? I don't think so. That is kind of very unfair on City in my opinion. Just in my opinion. और मैं City fan नहीं हूँ. I'm just being the neutral here. Absolutely. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं Chelsea का player डालूंगा extra. I'm just being fair in my opinion. It's your opinion. I respect that 100%. Like अरे सिटी हब यार पता नहीं यार गलती से हो गया होगा. सिटी हब इज अ गुड फ्रेंड, इज अ भाई यार अपना. आई अपॉलोजाइज अगर गलती से हुआ है, लेकिन I was hoping that basically वो नहीं हो and warning मिले. Again, mods, I'm repeating that. Let's do that. Bhai, if you're Manchester United fan, the current situation, if you're picked between Nunez and Frenkie de Jong, which player would you go for? Honestly speaking, 100% Manchester United need a Frenkie de Jong abhi. I don't think they need a Nunez right now. अच्छा, that's मेरा opinion for this season. हाँ, अगर आता तो बढ़िया है for Manchester United. लेकिन again, I see that Frenkie de Jong, because of the fact that Ten Hag connection, he was brilliant under Ten Hag. और मुझे लगता है he can do a bit of both what Manchester United needs in midfield. और of course you still need a DM. लेकिन यार आपके पास रोनाल्डो है who can do a job. And I don't think यार Ten Hag is going to play the way Ragnick plays. So Ronaldo is still fit. As a Chelsea fan, which player will you go for, Koundé or Koulibaly? 100% Koulibaly. Koundé is overrated. You heard it here. Koundé is overrated. ठीक है, मैं जब भी देखा वो मिस्टेक्स करता है and he is not worth 70 million what Sevilla were asking initially. हाँ, अगर वो आता है 50 मिलियन में, brilliant signing क्योंकि he has a higher ceiling than a Christensen and that's a fact. लेकिन I don't see him as a starter as Chelsea on day 1 of the Premier League अगर आता भी है तो. That's my opinion. लेकिन definitely Koulibaly I can see that.
Newcastle, yes, Sven Botman, काफी interesting है. The Newcastle are going for him again, and that looks mighty because again like Kunde, काफी बात हो गई already, so it looks like it's happening. नहीं नहीं ये नहीं होने वाला. At least for the next 2 to 3 seasons लिख कर देता हूँ, नहीं होने वाला. I was talking about Frenkie de Jong to United भैया. Okay. मैंने सोचा यार चेल्सी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं. नेक्स्ट लेते हैं. 150 मिलियन के चावल मत लो. हाँ 150 मिलियन तो नहीं यार, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 90 मिलियन. 90 मिलियन एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ यार, रियल मैड्रिड फैन हाउस, आप तो बहुत खुश होंगे. खुश तो होंगे आप काफी आज, क्योंकि काफी चीज हो रही है फॉर द ऑपोजिशन. लेकिन रियल मैड्रिड आर सेटल्ड बिकॉज च्यूआमेनी इज फॉर्मल ऑफिशियल एनी मोमेंट. बिस्मा को हम लोग को दे दो. नहीं भाई हम लोग नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास है भी नहीं. लेकिन बिग अप टू जस्ट वायला, Chelsea fan in the house, and would like to know your opinion as well. Just Viola, what do you think about the latest news that I just covered or Fabricio has shared? Pochettino to PSG, कभी तू राजी लगती है, हारी हुई बाजी लगती है. Hello to Shrey Patil as well. Liverpool won but was not able to score a single goal in finals. That's a reality. Again, I'm not comparing the teams here. I'm just saying that Liverpool has spent so much and they get a bias from the English media. Let's get it right. Okay? Come on, Liverpool fans. Let's be honest. Nothing against you. Nothing against Liverpool. I don't think it's Liverpool's fault. उनकी गलती नहीं है. लेकिन let's be real. Liverpool get a bias, and that's a real thing. आप छह players कैसे pick कर सकते हो in PFL team of the season versus Man City who won the Premier League, man. And that's the reality. और मैं थोड़ा agitated हो रहा हूँ, and that's the thing. मतलब this has some. As a Chelsea fan, I feel it every moment, man. And again, Chelsea fans will get it exactly what I'm trying to say. And again, it may be opposition, but again, I respect Liverpool. Do not dislike or do not unsubscribe because of that. Because I'm not saying for the sake of it. You have seen me praising a lot of Liverpool as well. So I'm just being, how it is. अंकित भाई आपका अच्छा, मैं यार सिटी हब यार बार बार मुझे आ रहा है भाई. क्या हुआ यार सिटी हब? आप मुझे डीएम करो. लेकिन आई एम होपिंग दैट इज नॉट द केस. आई होप दैट इज नॉट बीइंग डन. और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यार एक जन ही काफी लोग बोल रहे हैं मुझे सिटी हब इज नॉट एक्सेप्टेबल. यार मुझे प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट. And that is absolutely not accepted. City Hub, I might have to take you off as a mod. ठीक है, क्योंकि आप इतने रेगुलर भी नहीं आ रहे हो. I respect you, you are a good friend, brother. लेकिन I'm hoping that अगर ये आ रहे आरोप आप पर गलत है लेकिन सही है, तो यार I'll have to take off for the time being, right? What do you think, Nunez to Liverpool? Is he worth the price Liverpool are paying? He's not the worth. He's not worth. लेकिन just like a Kunde in defense for Chelsea, he has a ceiling. अच्छा, under Klopp, under Firmino's mentorship, I think he can become very good. And I think हमने देखा है भाई against Barcelona in the Champions League, he can do it. He can do it absolutely. Not just that, I think he had a madness season. तो लेना पड़ेगा भाई. और अगेन आप बोलोगे बेनफिका के लिए खेलता है भाई पोर्चुगीज लीग में. It's not too bad. It's not too bad. Koulibaly is an upgrade on Rudiger. मतलब I think in terms of someone who plays 4 at the back, I agree with this comment. I agree, Shrey. लेकिन हाँ 5 at the back I disagree. लेकिन 4 at the back I agree with this. लेकिन अगर वो सच है, I don't know if Baba commented. Big up to Baba. Shout out to him as always, big brother. लेकिन हाँ, Frenkie de Jong to United first, allowed by Leva to Barca, then Mane to Bayern, then Nunez to Liverpool. Then we would go in order soon. Okay, domino proper हो रहा है. Yeah, it's going to happen. Don't worry. Officially, the transfer window is just open this week, so hopefully we will get there absolutely. यहाँ पर हम आने वाले हैं. We'll come to this conversation when we discuss UEFA Nations League or the FIFA World Cup, जिनका we are planning along with Who Am I season 3. We are planning. Hopefully the guests are available and we do it this weekend. If not, coming week 100% we'll talk about this. Gnabry आर्सेनल आना चाहिए. I know थोड़ा अनरियलिस्टिक है. विप्ला ज्योति, सॉरी टू से, लेकिन नहीं आने वाला यार. ये तो मैं बोलता हूँ वेरी वीक एब्सोल्युटली. लेकिन भाई काफी लोग ज्वाइन किए हैं एंड आई एम होपिंग एवरीवन लाइक इट. एंड लाइक आई सेड अगेन, शाउट आउट टू मिकाइल. और काफी और भी न्यूज है, हम डिस्कस करने वाले फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स एंड आई माइट टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. सिटी हब अगेन आई टेक योर कमेंट. लेकिन भाई प्लीज डीएम मी if there's something going on. Please do not block just for the sake of it. I would say warn करो एक दो बार proper as a mod. And if you want to block, do let me know. We're not blocking. आप time out दो यार at best. We're not blocking people. We're not doing that.
This is a fan channel for all to see. I'm making myself very clear, all the mods, and of course, it helps that mods are here, but let's not misuse our power or not do it by mistake. Be a little bit careful as well. Big up to Darren Lobo bhi, jo bane hain hamare naye member. Of course, always will remember, bhai, Darren and Mikhail, first members of Almighty Blues family. Of course, everyone watching is also part of the family, but with members, we are obviously not going to have more perks. Absolutely. Realistic trophy for Chelsea next season, Manmohit. यार अगर एक ट्रॉफी भी मिल जाए ना मैं मनमोहित हो जाऊंगा सॉरी बट यू नो व्हाट आई मीन राइट एब्सोल्युटली तो आई एम टेकिंग अ टॉप 4 वन ट्रॉफी एंड आइडियली आई वुड लाइक टू गेट एन एफए कप अगेन रियलिस्टिक मैं बोल रहा हूं राइट यूसीएल इज नॉट रियलिस्टिक एट दिस पॉइंट टाइम लेट्स बी ऑनेस्ट ठीक है सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर एन एफए कप एंड मे बी कैरेबाओ कप एज वेल थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूं लेकिन आई थिंक दैट विल बी ब्रिलियंट लेकिन हां रियलिस्टिक वुड बी वन कप ट्रॉफी एंड टॉप 4 बिकॉज Tottenham are doing a madness absolutely. हाँ आयुष ये लग रहा है मुझे from what it seems like definitely yeah I agree with this comment totally agree and everyone do like and subscribe do not forget absolutely do not forget यूवेंटस को डी मरिया क्यों चाहिए किएजा को सेल करना है क्या नहीं यार किएजा दूसरे विंग में खेलेगा डी मरिया दूसरे विंग में खेलेगा आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होने वाली है लेकिन मुझे लग रहा है डी मरिया टू बारसा इज मोर लाइकली एट दिस पॉइंट इन टाइम तो यहाँ पर क्विकली मैं और भी थोड़ा न्यूज है तो क्विकली मैं बता देता हूँ और मैं देख रहा भाई लाइक्स 100 ही हुए कम ऑन यार वी कैन इजीली रीच टू 200 इतने सारे लोग थे इतना सारा न्यूज आपको मिला है और ऑफ कोर्स यू गॉट ब्रेकिंग न्यूज अबाउट ऑलमाइटी ब्लूज एफसी स्टार्टिंग द मेंबरशिप एंड वी हैव गिवन अ रिएक्शन about Premier League team of the season. आप भी अपना दीजिए. What do you think? But yes, Koulibaly to Chelsea is what I am calling. That's just my opinion, my gut feeling, and going by reports. और मुझे लग रहा है जो साइमन फिलिप्स ने ट्वीट किया इट्स अबाउट आवर ऑफर जो हमने दिया है 40 million euros plus 10 million net salary. I think it's good. Jesus, Sterling, Gundo भी ले लो. Any club can buy them, but not Bernardo. Fair enough. From a City fan, absolutely. ओके नॉट श्योर फॉर व्हाट इज दिस लेकिन हाँ यहाँ पर प्रथम बोल रहे हैं बुस्केट्स रॉड्री फेबिनो कैसेमिरो किमिक यू हैव टू चूज वन डीएम फॉर योर टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग तो कंडीशंस क्या है कंडीशंस इज बेसिकली रीसेंट फॉर्म और बेसिकली द लेगेसी भाई लेगेसी में तो एब्सोल्युटली नो डाउट आई विल पिक बुस्केट्स ठीक है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी आई विल पिक किमिक इन टर्म्स ऑफ फॉर्म आई विल पिक रॉड्री हाँ कैसेमिरो ब्रिलियंट लेकिन कैसेमिरो इज नॉट इंडिस्पेंसिबल इन रियल मैड्रिड एनीमोर फेबिनियो ब्रिलियंट लेकिन अगेन थोड़े से मिस्टेक्स अभी है कंपेयर टू रॉड्री जो सीजन थे उनके लिए तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर okay I think I've already taken Calvin Phillips or Bissouma Rice choose one according to price tag and quality of player Ayush push रहे तो यहाँ पर I think well price tag के हिसाब से देखें तो I think it's a no brainer Bissouma has to be the target ठीक है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी लेकिन आई थिंक कैल्विन फिलिप्स और राइस के बीच में आर्ग्यूमेबली मैं बोलूंगा डेक्लन राइस लॉट ऑफ पीपल से डेक्लन राइस थोड़ा हाइप है एंड ऑल दोस थिंग लेकिन जो इंप्रूवमेंट मैंने देखा है डेक्लन राइस में इन द लास्ट 18 months I think it is one of the most improved players altogether जो हमें दिखने को मिला है प्रीमियर लीग में someone who can not only do a proper DM job जो इंग्लैंड में किया था in the Euros but he can also do a lot more and what is that he can travel with the ball he can score goals he can play as a CB as well तो काफी सारा है डेक्लन राइस he's a captain material as well तो डेक्लन राइस has to be the guy कैल्विन फिलिप्स मैं जाऊंगा नहीं That's my opinion. Also, recent injury history of Calvin Phillips. You might say brilliant player, nothing against him, absolutely. But that is what मेरा है. But let's see. यहाँ पर कुछ आ रहे हैं. Sadio Mane to Bayern is pretty close. Should he go? Sadio Mane, I think he'll be a great fit. Again, आप बोलोगे Bayern में already है Leroy Sané है. You have Gnabry. Gnabry might move. इसलिए मैं बोलता हूँ यार Sadio Mane will really fit well. और वो number 9 भी खेल सकते हैं. Him and Muller can rotate. अगर by chance उनको नहीं मिलता है top striker. मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा if they are going for a proper striker or not Bayern लेकिन हाँ in my opinion Sadio Mane fits in well the way he is playing I think brilliant signing होगा Bayern Munich के लिए और arguably आप बोलोगे on form he is better than Sane I know different players but just saying out there I feel like rather than Kunde we should buy most centre back options and rotate them next year's transition anyways Shrey I couldn't agree more भाई मैंने तो बोला Kunde is overrated ठीक है मतलब again I might be one of the few guys who says that but that's a fact he is not worth 60-70 million ठीक है लेकिन the fact is आप इतना इन्वेस्ट कर दियो टाइम एंड मनी ऑलमोस्ट सो लेट्स गो फॉर हिम ठीक है he has a ceiling Tuchel likes to play 3 at the back he is good at 4 at the back as well comparatively to a lot of other options तो यार इसलिए we are going for him
और यंग है, तो अभी भी he can improve, remember, और ball playing ability है. So I think going for him is not bad. It's just about other players we have to kind of go for maybe not so expensive players उसके वजह से. But I think realistic हो रहा मैं, nothing else. Yes, Drogba, ये है malnutrition Drogba, but brilliant to see Drogba always. Like and subscribe guys. हम लोग तो happy है, बस एक Gnabry या Nkunku हो जाए. अरे रियल मैड्रिड भाई. बट असेंसियो कहाँ जा रहे हैं भाई? मतलब लेट मी नो वेयर इज असेंसियो गोइंग. असेंसियो के काफी स्टोरीज आ रहे हैं अभी. असेंसियो विल बी द इंटरेस्टिंग वन. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो रहे रियल मैड्रिड में. आई डोंट नो. डिस्कस करते हैं हाउ इज गोना अफेक्ट ऑन क्लब्स. यस, वी विल, एंड ऑफ कोर्स हम वर्ल्ड कप स्ट्रीम करने वाले हैं, एंड इन दैट probably we'll take up this topic football creeks, but we'll have to discuss that for sure 100%. यहाँ पर बारसा फैंस मेरे ले रहे हैं यार, वो आ रहा है, देखते हैं भाई. मतलब अगेन आप बोलोगे सो मैं बोलता हूँ माइटी यार, तो चेल्सी, मतलब it'll be like really a painful thing वापस, Koulibaly doesn't come. Absolutely. Let's see. अच्छा, Mshare in the house, big up to see and Mshare as well. By the way, people जो regular members हैं, I'm just letting you know again, we have started a membership. Again, shout out to जो members बने हैं. लेकिन यहाँ पर और कुछ news आए क्या देखते हैं quickly. If there's some major news coming in, definitely Gabriel Jesus, वो एक news आने वाला है in the coming days, which will be huge. यहाँ पर आ गया है tweet Fabrizio Romano का. I don't know if it's breaking news people for Gabriel Jesus. यहाँ पर quickly मैं share करने वाला हूँ. भाई साहब, अगर Gabriel Jesus, अच्छा, he still wants to leave Man City. An expectation is for Gabriel to join a Premier League club this summer. आया था, ठीक है, 2 दिन पहले हम बात किए थे. Gabriel Jesus gonna join a Premier League club this summer and not Real Madrid, as explained 2 days ago. More to follow soon. Gabriel will leave Man City for sure. No changes expected. So quite possible. मेरे लिए Arsenal he might be a starter. Chelsea he may or may not be a constant starter is what I am saying. That's just me. अगर Dembele आते, I would rather prefer Dembele because I think हमें चाहिए एक proper striker rather than Gabriel Jesus, क्योंकि हमारे पास floating striker है and Havertz. We already have that. I think हमें कुछ और चाहिए. Broha is not a starter element अभी भी, so that's why I need a proper striker rather than Gabriel Jesus. That's just my opinion. What I want as a Chelsea fan, but I can see that why he's linked to Chelsea as well. The way Tuchel plays, I can understand him being interested. But Arsenal में भाई आपको शुरू करने को मिलेंगे games, and yes, it's Europa League. But come on, let's be honest about it. You will start every game, you'll be probably happier. That's what I'm guessing. I know even that's not a superb fit, I would say. Lekin I would still say it's a very good fit. It's a very good fit compared to Chelsea. Lekin हाँ, ये I don't know if I wanted to show it or not. For people who joined late, आपके लिए है. Of course, Mr. Barca, he is gone. मतलब thanks for whatever आपने किया है. लेकिन again, I'm not as emotional as what I should have been, because this guy was. I think he joined, for people who do not know, Jose Mourinho second spell में वो आए थे 2013 में, and that's a reality. 2013 में आए थे along with Azpilicueta. He was one of the longest serving Chelsea players. हाँ, maybe in between he went for loan couple of times, इसलिए आपको याद नहीं है. लेकिन यार at the same time I think किया है serve, but the way he's leaving Chelsea, absolutely not great. यार, absolutely not great. So I don't see that's great. Lekin Barca fans, what do you think about Christensen? Mistakes? Back four, I'm not sure. Still have my question marks. Can you explain in short how did Chelsea win UCL with Werner, Havertz, while Tuchel coming mid-season? Nobody know, amazing thing how he did. अरे हमने एक share किया था, एक stream किया था, by the way. We had Guruji in the house, we had Chirag in the house, and हमने एक किया था about Roman Abramovich era. तो उसमें हमने बात किया था about this topic as well, about Tuchel. And why even Lampard should get a lot of praise जो नहीं मिलता उसको. Not many people talk about that. Plus Tuchel जो किया था change. And even Conte in the past with the Premier League, he had done. He just in a kind of as in snap, he just changed it. वो है मतलब ability है भाई Tuchel की. लेकिन at the same time आप बोलोगे यार man management comes into picture. Lampard was a great man manager. Tuchel did it. And of course काफी young players थे, काफी players को नया kind of environment था, तो he kind of got them together. And of course, एक था ना यार, we are not favorites, so let's just go for it. Or we had not much to achieve in the league, so that's why we went for in the Champions League. So in a way, थोड़ा lucky भी थे. I have to accept that. लेकिन I think Champions League जो भी team जीतती है, and I say it, every team who wins the Champions League gets some amount of luck, and we needed that, but we deserved it absolutely. जो हमने किया था performances in the Champions League, brilliant. और हम definitely वापस से करेंगे भाई Champions League stream भी कभी. I'm glad to have another defender. Chalo, Barca fan is happy to have Christensen in the house. Asensio is essentially a cam, and 4-3-3 may no tense work.
at Madrid. He will move out of Spain. Maybe United can use him as okay, fair enough, bro. Second starter. Uh, Bhai, Chelsea are not going for De Jong. Why? Okay, yeah, I would have loved him at Chelsea. Like, the fact is, I want Chelsea to be more flexible. Again, Jorginho, the main criticism क्या थी that he's not your typical DM. हमें एक चाहिए एक typical DM. If we are investing big there, we might go for two so above average players, or we might go for one Declan Rice. तो इसीलिए we are not going for De Jong because we have a lot of number eights. याद करो, we have Gallagher coming back. Gallagher cannot be let go. Gallagher is coming back. Mount can play there. Number eights है काफी यार. तो I think that is one of the reasons why we're not going. And of course, expensive भी है De Jong. तो हम rather we concentrate on areas where we need more because हमारे पास 500 million तो नहीं आने वाले ना, 200 million ही है. We'll try and spend it wisely. Not strongly अरे we are targeting Dembele. Dembele is definitely भाई, वो तो मैं बोला माइटी, अभी भी बोल रहा हूँ माइटी. It's just that I think Kunde was already in London, तो कुंडे पे ज्यादा फोकस होगा as soon as the transfer window officially opened, और then Dembele होने वाला है. It's what I am guessing. Again, my gut, I might be wrong. Let's see. भाई नहीं चाहिए जेसूस का लिंक करो. अच्छा, Chelsea well deserved थी. Nobody can win like that. Absolutely man. मतलब again 100% deserving. 4 players on the way out from Chelsea. Official news. Wow, interesting. Chelsea में lot of changes. मतलब it's a crazy season man. मतलब already a crazy season होने वाला है. लेकिन भाई crazy season, I know. What about Arsenal? Arsenal has an agreement in principle with Nketiah and his agents to sign a new deal. To Arsenal, the fact that Nketiah had, do you need a Gabriel Jesus? मेरे लिए it might not be a very different kind of striker, but definitely a much better striker. So it's a upgrade, लेकिन it will not be an ideal. मैं बोलूँगा in terms of fitment, it is mighty, not almighty. ठीक है, लेकिन हाँ, Everton have actually activated the clause to extend Begovic deal for further season as expected. Everton, of course, Begovic, I think probably will have a Chelsea connection in a strange way with Lampard. वो है थोड़ा, लेकिन हाँ, talking about Lampard, one manager who's back to management, for people out there who do not know, Serie A lovers especially, Andrea Pirlo. हाँ, not Gattuso. Gattuso to Valencia हमने already cover कर लिया 2-3 बार in previous transfer streams. This is Andrea Pirlo is basically going to be the manager for Karagümrük. I don't know. It's a Turkish side basically. So all the best to him. I would say not a bad move. Juventus was too high, too much pressure for him. Maybe like a Lampard, he should have taken a step-by-step process. वही है. लेकिन हाँ, again, Fabrizio Romano ने बोला है Zidane का rumor false है, but again, I am the one who's kind of following a lot of French journalists as well closely. वहाँ पर things are different. So that's why I'm saying that वो लग रहा है mighty मुझे. By the way, Wolves are in talks with another Portuguese. It's Paulinho. Paulinho is going to be going to Wolves. Looks like the price tag is around 20 million euros. Wolves is Portugal part 2 by proper हो गया है Wolves absolutely. Or what about Inter fans? My Dybala going to Inter. It's looking likely. It's looking very likely. ये तो बोलता हूँ मैं almighty है भाई. मुझे लग रहा है almighty absolutely. लेकिन talking about almighty, Chouameni to Real Madrid, that is going to be almighty. लेकिन Gavi will be extending new deal till 2027. Brilliant deal होगा उनके लिए. So that is also looking almighty. Definitely वो होने वाला है from what I see. It's going to be, I think, एक clause था, 50 million clause था, which is basically a release clause, which will probably be removed. और वो kind of agreed upon हो गया है, and it's going to be formal very soon. But Arsenal की बात कर रहे थे हम. Arsenal का एक और होने वाला है, and that is going to be deal signed between Arsenal and Sao Paulo for Brazilian winger Marquinhos. Honestly, Sao Paulo के winger Marquinhos, I don't know much about him. If people know, do comment in chat. Do let me know Arsenal के लिए कैसे होने वाले. लेकिन talking about someone who plays on the wing, not wing, attacking wing, लेकिन right back or right wing back, that is Alessandro Florenzi. Florenzi will join AC Milan on a permanent deal as expected. Good deal मेरे ख्याल से AC Milan के लिए. Leadership ability रखते हैं और काफी experience है. So I think this is really a good deal for me absolutely. लेकिन हाँ, बहुत सारे न्यूज अभी भी आ रहे हैं about Bernardo Silva to Barca. That is going to be the interesting part. वो देखते हैं भाई होता है कि नहीं होता है. अभी भी यार मैं वेट करूंगा. लेकिन एक क्विक न्यूज मैंने कवर नहीं किया था, मैं क्विकली बोलने वाला हूं यहाँ पर. Inter Milan are really interested in Nikola Milinkovic as a potential new center back. ठीक है, that is interesting because PSG are following Skriniar.
Honestly, मुझे नहीं लगता होने वाला है. I would say a little weak because Skriniar was one of the main defenders in the entire kind of period that they had in the last couple of years. लेकिन talking about Italy, Paul Pogba to Juventus looking almighty. That's going to be happening for sure. यहाँ पर we have another new member in the house, Shrey in the house. Absolutely brilliant. कि Shrey member बने. Shrey, welcome to the Almighty Blues family, further extended family. Definitely Shrey, or we'll probably discuss a lot more in the coming season. Lekin again, Shrey, just knowing you as a fan, what are your expectations from the club this season? In terms of finishing, what would you be happy with? Let's hear from the new member Shrey Patil. Big up to Shrey यार, बिल्कुल. Marcelo to Marseille thoughts. ये not bad होगा, not bad. I think वो लीगा में कर सकते हैं अच्छा. मतलब I think it is a good move, absolutely. I know मतलब that pace he kind of never had in recent times. लेकिन I think with Marseille, who kind of won't play football as well, he's decent. Any good player or they will just चेल्सी और मैन यूनाइटेड का स्टोरी यही है यार. ऑनेस्टली, लेकिन यार करेंगे भाई, हम करेंगे, टेंशन मत लो. यूनाइटेड भी करेंगे, चेल्सी भी करेंगे. फ्रेंकी डियोंग मैंने बोला है माइटी होने वाला है एब्सोल्युटली. मार्सेलो वियरा इज गोइंग टू लीग ऑन दिस सीजन. ओके, ये आई एम नॉट टू वेरी श्योर बट इट बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ इट हैपेंस. In addition to Christensen, Drinkwater, Musonda and Clark's out. Okay, thanks for the information, Jaswala. Yes, those are quite obvious. Drinkwater had already kind of put in a post. It was kind of known. Musonda to last season ही डाल दिए थे. And of course, Clark's alter is a little bit a saddening moment because I was hoping that he'll become a left centre back at some point. But that's actually good update from Jaswala. Thank you. Spurs का again यार, Spurs का unfortunately आज इतना नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर recently from किए. From what I know, Spurs they were interested in Eriksen breaking. I think Eriksen to United ज़्यादा लग रहा है. I would still say that is also so. तो मैं बोलूँगा Spurs wait करिए भाई. हाँ, the fact that Bastoni is not coming, I think a centre half is something that you need because Davis is not going to start हर एक गेम. वो एक है. तो आप बोलिए आप किसको चाहेंगे, लेकिन as of now there is no strong links जो मुझे दिखा है. In talks Asensio reports, not a bad move. Not a bad move. तो अगेन एंटनी नहीं आ रहे होंगे इसलिए मे बी एसेंसियो इसलिए हो रहा होगा. दैट्स द थिंग. लेकिन हाँ, लाइक आई सेड, दे प्रॉब्ली वुड गो फॉर दैट अगर ग्रीनवुड को वापस अब्सॉर्ब नहीं करते मैन यूनाइटेड, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस एज वेल. Nkunku मुझे नहीं लग रहा था टू यूनाइटेड, बट हाँ, दिस माइट एक्चुअली बी पॉसिबल. बट अगेन द प्रीमियर लीग, एसेंसियो टर्म्स ऑफ फिटमेंट मैं बोलूंगा सो देखते हैं. मतलब great goal scorer, he has a very good goal on him, or good player of the ball. United way, Ten Hag way, he fits as well. लेकिन in terms of Premier League थोड़ा डाउट है मेरे को, just like Dybala का था मेरा. Not very different players, but you know what I mean. I hope, right? We'll have a bigger picture after transfer window. Absolutely, that's a fact as well. Shrey बोल रहे didn't have pace, but his crosses were more accurate than atomic clock. Conte poaching players from Juve. Yes, absolutely. Conte doing his stuff, and of course, I think it's Paratici. I don't know what's the person's name. The person who's behind that work, brilliant work, जो उन्होंने किया है with Kulusevski coming in, of course, with Perisic coming in. So that's brilliant work, absolutely. Generally from Italy. What do you think about Asensio? You haven't really watched La Liga this year. Again, मैं बोलता भाई थोड़ा सा हार्श होते हैं मतलब रियल मैड्रिड फैंस फॉर असेंसियो. बंदे में है. हाँ, you kind of like, I would say like Chelsea were expecting with Hudson-Odoi, you were expecting from Asensio and more even. लेकिन he has actually done better than Hudson-Odoi. I'll put it that much at least. I know different players, different wings, but just putting it out there. Bernardo Silva will end up signing a new contract. देख लो, cause don't want him to leave. And I feel वही है, मुझे वही लग रहा है होने वाला है. I feel I agree with you. कॉन्टे कोचिंग है, अच्छा ये ले लिया था मैंने. नहीं भैया, हम तो एंटनी ही अरे एंटनी इज अ बेटर प्लेयर, बट व्हाट इफ एंटनी वांट्स चैंपियंस लीग फुटबॉल? दैट माइट बी द थिंग, राइट? 100% सूटेबल. हकीमी चाहिए था ना, हकीमी चाहिए था टूकल को. हकीमी का रिप्लेसमेंट कौन था इंटर में? डेंजल डमफ्रीज. और भाई ही बॉम्ब्स ऑन लाइक एनीथिंग. ट्रस्ट मी, he does. हाँ, थोड़ा डिफेंसिवली he can be better, but I think wing backs में we know that's a fact. I think I'll take him any day. Son deserves plays more than Mane did. हमने डिस्कस किया दानिश इन डिटेल, बट अगेन डू वॉच बैक द स्ट्रीम. लेकिन ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि यार रियल मैड्रिड अभी यार आई वोंट बेट एनी टीम अगेंस्ट रियल मैड्रिड द वे कमबैक्स कर रहे थे लास्ट फ्यू मंथ्स में. वेल, फेयर इनफ, इट्स अ मस्ट फॉर रीबिल्ड. मैं बोलूंगा फ्रेंकी के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा डीएम लाना, मुझे लगता है. Is that United has the chance to sign Conte?
Just a pun on United, just for fun. Did Lewandowski go to Barca? He's on the way. ट्रेन पकड़ रहा है. I think first ट्रेन मिस हो गई है, लेकिन दूसरा ट्रेन पकड़ लेगा. भाई FCL, Martial, Dean Henderson, B, Jones, AVB. How much million can we generate from these players? Maybe आप बोलोगे हेंडरसन के लिए हाँ, quite sellable. Bailey maybe yes. AWB of course. Aaron Wan-Bissaka एज में है, मतलब ही हैज हिज फीलिंग, लेकिन जोन्स के लिए कम ऑन, यू कैन एक्सपेक्ट मच यार. आई थिंक वो हेल्प होगा, लेकिन द फैक्ट यार यू आर आल्सो बाइंग बिग, तो आई डोंट थिंक इट्स नॉट मनी व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है एनकुकू और जेसूस, एनकुकू एनी डे एनकुकू आई विल टेक. श्रेय मैं तो अगर चेल्सी की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ जेसूस प्रीमियर लीग प्रूवन, मे बी टुकल, दैट्स व्हाई ही इज प्रेफरिंग हिम, और एनकुकू खुद प्रेफर कर रहे हैं पीएसजी. दैट माइट बी अ थिंग. Yeah, he's a better defender than Hakimi, but Hakimi is a better attacker. Lekin overall, I would say is comparable to Hakimi. He's been underrated in my opinion. नेमार एंड डेम्बेले यार, मैं तो भाई मेसी को भी चाहता हूँ, लेकिन चाहने से क्या होता है मेरे, कुछ नहीं होने वाला. बट यार सब लोग लाइक कर दीजिए. आई होप आपको अच्छा लगा. काफी सारा न्यूज आज हम बात की है यार. लाइक्स थोड़ा बढ़ा दो, लाइक्स बढ़ा दो. लाइक्स आर एब्सोल्युटली फ्री, सब्सक्रिप्शंस आर एब्सोल्युटली फ्री. यस, इफ यू वांट टू गिव सुपर चैट्स, ब्रिलियंट. इफ यू वांट टू बी अ मेंबर, come on, as in we'll probably have a lot of fun. Lekin I think everyone who comes on and watches, comments, and even kind of criticizes at times are welcome here. It's a fan channel for all to see. All mods, again, please be extra careful, be lenient. That is the first rule on Almighty Blues FC. हम allow करते हैं banter. Let's take that. Let's warn them. Let's try have a conversation. Let discuss about it, and then put them in timeout if need, and then block, but do not block. Absolutely. बार्सा विल गिव डियोंग प्लस 20 मिलियन टू सिटी फॉर सिल्वा. होने नहीं वाला, लेकिन मुझे नहीं लगता होने वाला है. एग्जैक्टली मैन, जस्ट वाला लाइक सॉरी, बट आई वुड से दैट वी हैव काइंड ऑफ मिस्ड द बस देयर. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. स्टर्लिंग टू चेल्सी हो रहा है क्या अभिषेक? मुझे लगता है स्टर्लिंग से ज्यादा जेसूस न्यूज इज टेकिंग मोर मोमेंटम. एनकुकू आई वाज होपिंग, लेकिन आई थिंक दैट इज टेकिंग मोमेंटम. डेम्बेले आई वुड स्टिल से इज द वन गाय. अच्छा, फाइनल फाइनल में रूडिगर ने विलिंग गोल 1 गोल मार दिया, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? ओके, we'll look at that. मतलब obviously the guy will celebrate, but I will not say that it's bad for Rudiger or Real Madrid. For Chelsea it will be really bad. लेकिन भाई कभी ना कभी तो होगा ही. David Luiz, he was a cult hero. For people saying that मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. He was a cult hero जब चेल्सी में आए थे ना फर्स्ट स्पेल में, जब वो पीएसजी के लिए खेल रहे थे. पीएसजी के लिए he scored against Chelsea. He celebrated. So I think again he came back to Chelsea. Did I hate him? No. It will be so funny if Lewandowski doesn't go to Barca. No, he will. Let's be honest. नहीं होने वाला. मुझे लगता है होने वाला है. Laporta is really pushing as well. Okay, Dembele, Neymar. Yeah, definitely Neymar is the better one. Yeah, अगर मतलब different players, but Neymar I will take any day. Zidane to PSG. What? Yes, Zidane to PSG is looking more and more likely. Of course, not almighty, but mighty. What will happen to Rashford if they're going for another winger where Exactly. वही मेरा पॉइंट है कि Rashford might just be able to play as a striker. Maybe he plays two up top. हो सकता है. Ten Hag, again, I would wait for the first preseason match or the first few preseason matches of Manchester United to react on Rashford. Haaland at City, यार, Kevin De Bruyne think यार 20-25 गोल मार देगा. I think यार, I think easily Premier League में I think he'll get minimum 15, but I would argue 20. Nunez, maybe he'll not get as many starts. So मैं बोलता हूँ like Havertz had the second season at Chelsea, he'll have that kind of a season, which is decent season as well. नहीं नहीं होने वाला. नहीं. One player would swap with this Madrid team. It has to be Karim Benzema. Come on. लेकिन हाँ, from Madrid I would swap, and you can take anyone, but not Reece James and Mason Mount. I would say smash the like button, guys. Subscribe to the channel if you haven't. Absolutely. और हम live होने वाले हैं absolutely every day. Not only on Almighty Blues FC, but on Almighty Sports Plus on both the channels. It is road to 4K. So get subscribing, guys. Do not forget, like करो और take that poll. बहुत ही interesting, बहुत ही सारा news था for people coming in late to do rewatch it. But we'll be back on both the channels, like I said, for Nations League, for World Cup talks over the weekend, and Who Am I Season 3 is back soon. We'll be back. Do not forget, we have a new membership, and that was what we explained in the video as well. Take a look at our channel membership options, and we can discuss if required. यार आज मैं वॉच अलॉन्ग को नहीं करने वाला कृष्णा, थैंक्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन let's see if I'm able to do, I'll publish it. So do give me a follow on Instagram, on Twitter, on Almighty Blues FC, or just follow my community page. लेकिन यार we'll be back over the weekend for sure. I'm pretty sure हम बहुत content के साथ आने वाले हैं.
What happened to Free Kick Singh, a YouTube channel? His last video, okay, not sure about this. Yeah, World Cup talks. We'll come to the World Cup stream. Absolutely. Haaland Nunez both. अरे बहुत ही. We'll come to that later. लेकिन हाँ, brilliant है Saurabh and everyone who joined here. Again, mods, let's be little lenient. It is a fan channel for all to see. Hopefully आपको अच्छा लगे the stream, and we'll be back very soon, very regularly. So press that bell notification icon. Always helps. अभी यार we are going to Chirag's channel. So shout out to Football Medico as well. तो जुड़िएगा वहाँ क्योंकि हम बात करने वाले हैं और भी चेल्सी. Lots of them to be discussed. Take care. Bye. Thank you.